minute eliminator match is now going to start, and Kottary brothers will take over Kottary Skyhawks, and the first ball, and this time the batsman can't got any run. पहली गेंद इस वक्त फेंकी जा चुकी है और पहली गेंद पर रन से यहाँ पर नहीं मिला, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 0 पर। और गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट अविनाश की गेंद दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में गेंद पहुंची और गेंद को वहां पर फील्ड कर लिया गया। 1 रन का इजाफा और 1 रन के साथ स्कोर रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। इट्स 1 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर फॉर कोठारी स्काईवॉक्स। और जहां तक सवाल है इस वक्त स्ट्राइक का, तो राकेश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और राकेश इस वक्त सामना करेंगे अविनाश की गेंदों का। एलिमिनेटर दौर का मैच इस वक्त खेला जाता है इस कोठारी प्रीमियर लीग सीजन 5 2024 इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत। और इस बीच अविनाश दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन, नॉट सक्सीडेड, द बॉल केप्ट लो और गेंद सीधे पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो निश्चित रूप से पिछले मैच में तत्वमसी क्रिकेटर्स इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त कर चुका है। पिछले क्वालिफायर मैच 1 में उन्होंने माइटी बुल्स को हराया था। इस बीच ये गेंद बेहतर गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम अविनाश, मच स्ट्रेट लाइन, और गेंद को उछालने के प्रयास में चूके राकेश और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में। 3-4 बेहतर गेंदें इस ओवर में फेंक चुके हैं अविनाश, और एक नपीतुली गेंदबाजी इस वक्त करते हुए, और अविनाश फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद दैट इज अ गुड वन दिस टाइम, एक्स्ट्रा क्विकर, बैकफुट पर जाने के बाद गेंद को रक्षात्मक तरीके से पुश करना चाहता, चूंकि विकेट कीपर भी गेंद को ठीक तरह से गैदर नहीं कर पाया, और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 2 ऑन द बोर्ड, येट टू लूज एनी विकेट, एंड दिस इज द फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। तो इस वक्त अविनाश अब तक पहले 5 गेंदें काफी बेहतर फेंक चुके हैं, छठी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज संदीप सामना करते हुए। इस बार गेंद अप्रूटेड द मिड स्टंप, that is the wicket number 1, much straighter line and he just got the rid of the batsman. मिड स्टंप उखड़ कर गिरता हुआ, देखिए किस तरीके से हुआ था, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए, बीट हो गए और उनका मिडल स्टंप अप्रूटेड उखड़ कर गिरता हुआ, और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है। So fantastic over came to an end from Avinash. So maiden over, so maiden and a wicket over completed by Avinash, and this is an absolutely fantastic start for them in the bowling department for his team. सिर्फ 2 रन जो बने इस ओवर में, वो 2 रन भी बाई के रूप में थे, और मेडन विकेट के साथ एक बेहतरीन शुरुआत गेंदबाजी में दे चुके हैं गेंदबाज अविनाश। और अब गेंदबाजी का मोर्चा संभालते हुए गितेश, और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज राकेश के लिए। पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, फील्डर इस वक्त मैदान पर जाते हुए। पहली गेंद लेकर गेंदबाज गितेश तैयार राकेश के लिए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। फर्स्ट बॉल, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, एंड दिस कुड बी ट्रबल, बट दिस टाइम द बॉल वाज नॉट सो फास्ट as the bowler expected at the last moment. थ्रो कहना पड़ेगा, थ्रो उतना ज्यादा तेज नहीं था, और आखिरकार थ्रो सीधे टकराई थी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज के पीठ पर, और बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज पर वापस लौट चुके हैं। इस बीच वाइड का इशारा, 3 द स्कोर नाउ फॉर लूजिंग 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर इन फैक्ट। और गेंदबाज फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार बाएं हाथ के बल्लेबाज राकेश के लिए। यह गेंद ड्राइव किया इस वक्त खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन फील्डर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 4 रनों पर। एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए कोठारी ब्रदर्स कि गेंदबाज अब तक सिर्फ 4 रन पहले 7 गेंदों में वो प्रदान कर चुके हैं, और एक विकेट भी प्राप्त करने में सफल। निस्संदेह अगर एक चुनौती भरा स्कोर खड़ा करना है तो कम से कम 40 के आंकड़े तक पहुंचना होगा टीम कोठारी स्काईवॉक्स के बल्लेबाजों को। और इस वक्त जो कि 4 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर, और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए
इस वक्त गेंदबाज और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता। वह 4 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात और इस बीच गेंदबाज गितेश दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद को उछालना चाहता, गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए, गलत लाइन पर खेल गए, बीट हो गए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 4 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर और गितेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट ये गेंद इस बार ऑन साइड पर ऑफ द टोस गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल और गेंद जब तक फील्ड और डीप मिड विकेट पर कुछ हद तक दौड़ लगाने के बाद फील्डर द्वारा बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त निकाला था ऑफ द टोस डीप मिड विकेट पर बल्लेबाज यतिन ने और 2 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण करने में सफल। 6 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस और गेंदबाज गितेश अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को उछाला, गेंद हवे में लेकिन कोई फील्डर वहां पर नहीं, गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड थर्ड मैन की तरफ। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरा रन भी मिलेगा जरूर, इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्डर फील्ड करके थ्रो करे नॉन स्ट्राइक रन पर। बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर। क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज स्काई हॉक्स के इस वक्त रन बनाने की पूरी कोशिश यहां पर करते हुए और इस बीच गेंदबाज गितेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, पैरों पर टकराए, स्टंप्स को कवर करने के बाद गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाहता चूंकि और बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद थी। रन बल्लेबाज को इस गेंद पर नहीं बना। बेहतर गेंदबाजी इस वक्त करते हुए गेंदबाज गितेश इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी इस वक्त करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज यतिन इस वक्त सामना करते हुए और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद उछाला लेकिन फील्डर वहां पर कोई भी नहीं। कवर पॉइंट पर गेंद पहुंच चुकी है, फील्डर वहां पर गेंद को फील्ड करते हुए इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। कुछ हद तक वहां पर मिसफील्ड नजर आई और इसका फायदा उठाकर बल्लेबाज ने 2 रन पूर्ण कर लिए। तो 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 2 ओवर की समाप्ति के बाद इस वक्त स्कोर है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स द बैट्समैन ऑफ स्काई हॉक्स सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक। 2 ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इन बचे हुए 2 ओवर में कोठारी स्काई वॉक्स के बल्लेबाज और कितने रन बटोर पाते हैं। फिलहाल ऐसा कहना पड़ेगा द फर्स्ट 2 ओवर्स बिलोंग्स टू द बॉलर्स ऑफ कोठारी ब्रदर्स और इस वक्त गेंदबाजी पर उतरते हुए गेंदबाज जो कि इस वक्त दाहिने हाथ के गेंदबाज नया ओवर प्रारंभ करते हुए कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार राकेश। तो इस वक्त राकेश गेंदबाज और राकेश बल्लेबाज। राकेश के लिए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ और ओवर की पहली गेंद लेकर राकेश तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज राकेश के लिए ओवर की पहली गेंद ये गेंद बोल्ड आउट, जस्ट कॉल फॉर अ बिग वन, लॉस्ट इज ऑफ स्टंप, much straighter line and the batsman wanted to play it with a wrong line, not succeeded. The ball after defeating his bat stuck to his mid-line off stump. Second wicket lost, 10 for the loss of 2 wicket at the start of the 3rd over. In fact, for Skywalk, they are looking in trouble. युवराज नंबर 4 बैट्समैन इज नॉट कमिंग आउट टू द मिडल और 11 गेंदें कुल मिलाकर अब कोठारी स्काई वॉक
स्काई हॉक्स की पारी में शेष। देखते इन बचे हुए 11 गेंदों में स्काई हॉक्स के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। फिलहाल एक बेहतर गेंदबाजी का क्रम जारी रखते हुए गेंदबाज कोट्टारी ब्रदर्स के, और राकेश इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज यतिराज के लिए। फील्डिंग में जमावट इस वक्त कुछ हद तक चलती हुई और आखिरकार 4 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद। ऑफसाइड पर 20 गज के दायरे के अंदर सिर्फ 2 खिलाड़ी मौजूद। विकेट के पीछे शॉट थर्ड मैन और पॉइंट। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी, गेंद तक पहुंचना चाह चुके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 10 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। और फिर से एक बार राकेश गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा स्कोर लेग फील्डर के हाथों से गेंद चूकी। इस वक्त गेंद जाती हुई डीप बैक और स्कोर लेग सीमा रेखा की ओर, और गेंद को बेहतर तरीके से जब तक फील्ड करने के बाद थ्रो करे स्टंप सेंट पर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 12 रनों पर। और इस बीच राकेश अपनी ओर की अगली गेंद के लिए तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए क्रीज के कोने से ये गेंद इस बार दिस इज अ क्लीन हिट एंड दिस इज गॉन ऑल द वे, आई थिंक सो, यस इट डज, इट्स अ बिग fantastically struck, came from the bat of the right-handed batsman Yatin, और मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट करते हुए उछाल दिया इस वक्त डीप मिड विकेट, माफ कीजिए लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। यतिराज इस वक्त अपने बाजुओं को खोलते हुए जस्ट ओपनिंग हिज विंग्स नाउ, और ऐसे स्ट्रोक की सख्त जरूरत है इस वक्त टीम स्काई हॉक्स के बल्लेबाजों को अगर उन्हें रन की गति में एक्सेलरेशन लाना है। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को बोड़ना चाहा, शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा, 19 ऑन द बोर्ड for losing 2 wickets in the over number 3 in progress. Still the batsmen of Skyhawks are now fighting back after being a slower start. अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी, और राकेश इस बीच अंतिम गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यतिन के लिए, और ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, विकेट कीपर चुके शॉट थर्ड मैन फील्डर के हाथों में गेंद, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज 1 रन दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। वाइड का भी इशारा हो चुका है। 21 ऑन द बोर्ड एंड स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर, और राकेश अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाह, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली, फील्डर काफी पीछे तैनात, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, थोड़ी सी मिस फील्ड, बल्लेबाज दूसरा रन पूर्ण कर चुके, तीसरा रन लेना चाहते हैं, दौड़ पड़ने की सोच रहे हैं, लेकिन ऐन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित देखा कि गेंद थ्रो इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर पहुंच रहा है, दोनों बल्लेबाज 2 रन के साथ संतुष्ट। कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल, 3 overs completed, 23 on the board, 2 wickets lost, and now just a last over remaining in their innings. तो इस वक्त संतोष गेंदबाजी प्रारंभ करते हैं, ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार है। ये गेंद इस बार दिस इज अ क्लीन हिट, यस इट डज, इट्स क्लियर डिफेंस, इट्स अ बिग हिट, फैंटास्टिकली स्ट्रक, जस्ट स्टैंड एंड डिलीवर्ड एंड ही जस्ट गॉट दैट वन फॉर अ मैक्सिमम। तो रिप्ले पर देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था, और निश्चित रूप से यतिन का स्ट्रोक उनके टीम के रन की गति को एक्सेलरेशन यानी बढ़ावा दे चुका है।
स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर 29 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द फोर्थ ओवर इन फैक्ट। संतोष अपनी ओवर की दूसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट बैकफुट पर गए। बेहतर ऑफ कटर गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट उछालना चाहा था चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 29 रनों पर 29 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। 4 गेंदें बाकी अब उनकी पारी में। संतोष एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और ये 3 इस गेंद की इस ओवर की पहली गेंद में छक्का जड़ चुके हैं। दूसरा गेंद डॉट हो चुका है। तीसरा गेंद लेकर इस वक्त संतोष तैयार। यह गेंद इस बार ड्राइव किया स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड। गेंद जाती हुई स्ट्रेट हिट एरिया पर और गेंद को इस वक्त फील्ड करने में सफल फील्डर सीमा रेखा के अंदर। गितेश शायद फील्डर थे जिन्होंने बेहतरीन तरीके से अपनी बाईं ओर दौड़ते हुए गेंद को फील्ड किया सीमा रेखा के अंदर और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। देखिए किस तरीके से गेंद को ड्राइव किया था स्ट्रेट पास दी बॉलर और जैसे ही गेंद स्ट्रेट हिट एरिया पर पहुंचे सीमा रेखा के दीवार पर टकराया। बेहतरीन तरीके से गेंद को फील्ड किया था। आउटस्टैंडिंग फील्डिंग परफॉर्मेंस। 2 रन मिले और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार। गेंदबाज लेग स्टंप से लेग स्टंप पर आते हुए गेंद कौन सा पर उछालना चाह नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली। इन फैक्ट दे लुकिंग फॉर द सेकंड एंड दे कम बैक फॉर द सेकंड वेरी सेफली इन द एंड। 2 रन फिर से मिले। 33 रन इस वक्त चाहिए स्काई हॉक्स के बल्लेबाजों को। वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है और यहां पर सिर्फ 2 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी। तो देखते हैं इन बचे हुए 2 गेंदों में कोट्टारी स्काई हॉक्स के बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। और संतोष अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। इस वक्त यतिन एक बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन देते हुए सामना करते हुए ये गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में। गेंद जाती हुई फील्डर वहां पर मौजूद दूसरे रन के लिए दौड़े। इस वक्त यतिन स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं और रख चुके हैं अंतिम क्षण में। 2 रन पूर्ण करने में सफल। हालांकि स्ट्राइक रन पर थ्रो जरूर पहुंचा था लेकिन थ्रो यहां पर यतिन उससे पहले पहुंच चुके थे और आखिरकार स्ट्राइक को खुद अपने पास रखने में सफल। 35 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। हालांकि थ्रो पहुंचा था स्ट्राइक रन पर। पहले यतिन जो कि धीमे तरीके से पिच के बीच दौड़े थे लेकिन जैसे ही देखा कि थ्रो उनकी एंड की ओर आ रहा है अपने रफ्तार को उन्होंने बढ़ाया और आखिरकार दूसरा रन यशस्वीतम पूर्ण करने में सफल। 35 फॉर 2। द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप और इस बीच संतोष गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। यतिन इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद इस बार चूंकि ऑप्शन से बाहर थी विकेट कीपर कलेक्ट नहीं करता। वाइड का इशारा 1+1 2 रन एडेड। यतिन ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं। 2 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे। 37 ऑन द बोर्ड 2 विकेट्स लॉस्ट स्टिल अ लास्ट बॉल रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। यतिन इज बैटिंग ऑन 18 एट द नॉन स्ट्राइक रेट एट द सिचुएशन। और जहां तक सवाल है पारी की अंतिम गेंद का तो कप्तान यतिराज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार जो 11 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए गेंद ड्राइव किया। इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर मौजूद। मिस फील्ड इस वक्त बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। तो तीसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा। सो द इनिंग्स स्टार्टेड स्लोली बट फिनिश्ड वेरी वेल. Skyhawks managed to score 39 runs for losing 2 wickets in the stipulated 4 overs, and now they set exactly the target of 40 for Kottary brothers to qualifying for the qualifier match number 2 of this competition to face Mighty Bulls. और देखते हैं 40 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निर्धारित 4 ओवर में यानी 24 गेंद में कोट्टारी ब्रदर्स के बल्लेबाज किस तरीके की रणनीति टैक्टिक्स अपनाते हैं क्वालिफायर मैच नंबर 2 पर पहुंचने के लिए। तो करती है कोट्टारी ब्रदर्स या फिर कोट्टारी स्काई हॉक्स। तो एलिमिनेटर पारी का दूसरी पारी यहां पर शुरू होगी। चंद लम्हों बाद कोट्टारी ब्रदर्स की पारी की शुरुआत होगी। तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक हम
10 runs per over, the required run rate for the brothers to get the place in the qualifier number 2. Arish Patil signaling towards our scorer and he is shouting, it's play. First ball. Oh, that will go into be a healthy nick. That will go into be a healthy nick from the bat of the batter. The wicket keeper behind the stump fails to take the catch. This is going to be a very lucky escape here for Avinash. Can he manage to convert that life into big innings for his team? Wait and see. Rakesh bowls. Again, nicely bowled. Batsman couldn't manage to get the timing behind that drive. Just a single down to mid-on. With that single, brothers, they are off the mark. One without loss of any wicket in the over number of a first stage in progress. And a fantastic tournament is in progress in the name of Kottary Premier League 2024 Season 5. And thanks to Kottary, Yuva, Vedike, organizing such a wonderful and systematic cricket tournament in this most beautiful UCG cricket ground, known to be a Kashi of underarm cricket, one of the most beautiful as well as historical cricket ground here in Mangalore. And we are just waiting for the light will go into switched on, and after 6 o'clock, and ground will go into be a more beautiful after that light. We're just waiting for that the moment. Meanwhile, as the battle is on here from these two bad teams to get into the qualifier number 2. Lovely improvisation, but protection is given there in the deep backward point region for reward sweep because the fielding team captain know exactly the kind of batter he's having in the middle. The Gitesh is a good reverse sweeper of the ball, so that is getting one fielder in that region. And a different field set for both the batters. Now one fielder coming towards a deep long off. No protection in the deep in the backward point for the Avinash. This time he lofted. Ball is going and going, and it's going to be a chance. No, the fielder saves the run. I think it's going to save the boundary for his team. Excellent work because it's a long way to go. I would have a look at that one. From the long off region, he's almost covering the ground from long off to deep extra cover, and he's just saving the runs for his team. Excellent save by the fielder for his team. Again, drives that one, lack of placement, straight to the hands of short mid wicket, little bit hesitation for the run, and at last both the batters are going against that run, and score remains on 4 on the board. A tidy over is in progress here from Rakesh. Just 4 from that over and 1 ball remaining. Left arm, balls, drives that one, upishly but quite safely down to wideish long on. Just a single, great over. Great first over because it's a power play over, and the captain must be pleased with the performance of Rakesh, where he bowled that first over. Just 5 runs coming from that over. Now coming back to the equation, 18 balls remaining, 35 runs required for the victory. 18 balls, 35 runs required for the victory. Just under 12 runs per over is the required run rate. It seems to be a little bit the huge one, but if you wanted to make a little bit smaller one, they need to get one big over here. Brothers, after having a slow start, nothing much wrong with that. The wicket, they didn't lost any wicket, but that will not go into impact in this position. But very, very important, important for brothers that need to keep the hope of winning this match. They need to try their level best to get the remaining runs. 45 jersey number brought into attack. Yatiraj brought into attack. He will go into ball round the wicket. So after that power play, spread out field. The fielder one at deep square, like in front of square, one at mid wicket and long on, long off, deep extra cover. There is a short third man backward point, short extra cover, and short square leg behind the square. First ball. Wanted to go for the big drive. Again, is not really getting that much of timing. Just he wanted to post the ball. And it's very difficult sometimes. The bowlers like Yati is very intelligent bowler. You know exactly what the batter is doing here. Again, lovely shot. Just flicks it away down to deep square leg region. Fumble from the fielder. Avinash is a tall man, so that's so easy for him to come back for the second. And he made it quite easily in the end. 2 valuable runs. 7 on the board. Without loss of any wicket. Along with the singles, they need to look for some big shots. Otherwise, very difficult for them
to win this match. Again, he just wanted to go for the big shot and dropped by the long on fielder. And they were coming back for the second as well. So 2 more to the total. This is all we can see, that catchers win the matches, with one of the greatest slogan in cricket. The already Skyhawks, they dropped to 2 catches. Have a look at that fielder. Absolutely, he's not really rushing towards the ball, isn't it? Just waiting for the ball coming to his hand. And that's a big problem. Otherwise, he can make it so easy to take the catch. So 9 without loss of any wicket. Yatiraj balls this time outside the line of off time, but very interesting to see that the umpire will go into call. Suresh Mudabidri, right call there from umpire, and it is a right call, just a couple of inches inside the line, and Avinash a little misjudging, because all happening when the bowler is operating round the wicket, then but the batter is always misjudging the line. It is always problem we can see in the right-hander batsman when the bowler bowling right arm round the wicket, angling away from the right-hander batsman, and he just misjudging the line. And the right call from umpire Suresh Mudabidri. 10 without loss of any wicket. Still 30 runs required for the victory. 14 balls remaining. Gitesh is a key man for the side of brothers. You need to play sheet ankle roll here if they want to win the match. This time he wanted to sweep the ball. This time definitely umpire will going to call that wide. And now Yatiraj is saying that the batsman has got a bat onto that. But umpire is saying that nothing has happened. Now Harish Padil and Suresh Mudabidri will going to see whether they're in contact with the bat. If the batter will going to have any contact with the bat, no contact says by umpire, rightly so. And wide call by umpire. Sometime maybe the batsman hitting the ground hard from the bat. That might be the sound heard by the bowler. So he's just claiming that the batsman has got a bat onto that. But wide call by umpire. Again going to be a wide. This is always I will tell you, the discipline is so important in cricket. Now the 2 wides in this over, little bit gate will going to open for brothers. 12 on the board. White arm over the wicket. This is intelligent bowling there from Yatiraj. The batsman looking for the free meditated sweep shot. That's why the bowler bowling away from his bat outside the line of off time. Just a single. 13 on the board. 13 ball remaining. 27 more runs required for the victory. Yatin balls again. The Avinash just wanted to get the expansive drive but couldn't manage to get the timing. 1 more over completed. I'm not really, looks like it's going to be a good score on the board for brothers while chasing a 40. 14 on the board, still long way to go for team brothers to get that 40. 26 more runs required for the victory and 13 runs per over the required run rate. This is not a good sign for brothers. They have desperately wanted to get back in the game. They wanted to get 1 big over here. If they wanted to take the match into the final over, this is going to be very important for them to get some runs in this over. The Skyhawk, they got some very good bowling department, so that a lot of hard work is required from these 2 batters to get that 26 in 2 overs, but not impossible in cricket. Always there's a great saying in cricket, of course it's going to be a difficult one for the chasing team, but difficult roads often leads to beautiful destination. And destination here for the team is 40 brothers. And if they wanted to get that destination, they need to believe himself, need to believe with their the self-believeness. In fact, this is very important, that they can do the job. And of course, just they wanted to knock the T from can't, then you can. Manoj brought into attack, will go into ball over the wicket. Mid-wicket, deep square leg, deep long on, long off. Very, very interesting field set now. Short third man fielder coming into the short fine leg region. No man there in the third man. There is a backward point. Short extra cover, short square leg. No fielder in the mid-wicket. Oh, starts with the spectra wide. No wide, it's a no ball. Ball pitching outside the line of the pitch. So that it's going to be no ball. So no ball in the sense it's going to be a free hit delivery. Now 16, which is a total score. And
24 more runs required for the victory. The free hit delivery for Gitesh. He need to capitalize that one. Now the lights are on. Only one. Looks like the time is now is exactly 5 past 50. The enough light on the ground. This time is one. One bounce collected by the fielder at mid wicket. They were turning out for the second and they made it quite easily in the end. The couple of runs. The 18 on the board. 18 for no loss. No problem with the wickets in hand. They got all wickets in hand. Oh, this time it's going to be a chance here over the fielder. The batter's bat which is stuck in the ground. This is the biggest problem for Gitesh while you're going for the big shot. He hit the ground first and then ball came into his bat. That's why he couldn't manage to get the timing behind that elevation. He didn't got the distance but missed time cricketing stroke costing a huge wicket. And Gitesh back into pavilion. It's 18 for the loss of 1 wicket. The new batter in is Rakesh walking towards the middle. A lot of responsibility in his shoulder. The jersey number 15. Manoj after a ball that wide delivery, then he back with the wicket taking delivery. 2 runs scored between that. Third time in this over. Ooh, that ball just misses the leg stump, isn't it? It just misses the leg stump and by call by umpire. Almost exposed his stumps. Very lucky indeed there for Rakesh. Just by a whisker that ball misses the stump. Have a look at that one. Very close to the leg stump, isn't it? Wicketkeeper missed it. 19 on the board. 21 required. 9 balls remaining. Needed 1 big shot. Manoj. Oh, full toss delivery, but the batter Avinash really fails to capitalize that full toss. Just a single. Single will not going to help. Half of the job which is completed now, we need to complete another half of the job. That means 20 runs required, another 20 runs required. But the delivery is remaining only 8. Again, now one more very good delivery indeed. Rakesh every time is shuffled across the line, try to get the big one inside edge of the bat. Only single there. 21. Now I think this is the last delivery is going to be very important. Where the Avinash will going to get 1 big shot here. So 19 required. Again the full toss, second full toss in this over. Avinash fails to capitalize. Now last over remaining. 18 runs required from brothers to qualify for the qualifier number 2. $18 required from last over. It's not so easy. The leg spinner has been introduced. The Manoj, the hat-trick wicket getter. Sujay, little correction. Hat-trick wicket getter in the tournament. First hat-trick wicket getter. And now 5 balls remaining and 17 runs required. Carlos Betwet, who hit 3 sixes against Ben Stoke. And this time, ball is in the air and
and the catch is taken. The long on fielder have to keep the eye on the ball. At the same time, he need to keep eye on the wall. That is the boundary line. Otherwise, it's going to be 6. Have a look at that one in a replay. Excellent judgment, catch taken there by the fielder, not touching that boundary wall, and just inside the boundary line it completes the catch. Now 4 balls, 17 required. Santosh is a new batter in. $17 required and 4 balls remaining. So 4 balls remaining and 17 runs required for the victory. Right arm round the wicket. Oh, beautifully ball. Perfect one. Fantastic delivery indeed. It's not so easy. I will tell you that with the kind of the bowler bowling the last over is a very difficult one. Very, very, very effective leg spin deliveries. Again, lovely delivery. Oh, this time it's going to be a chance of run out. It's a run out, I think so, because the first attempt, the wicketkeeper fumbled, so he wanted to get the run. So it is considered to be a run out. Have a look at that one. The batsman wanted to get the run, and wicketkeeper behind the stump is make that run out. So 23 for the loss of 3 wicket. 2 balls remaining, 17 runs required. The door which is closed. Just like in the previous match. The 14 required in a 2 balls in the previous match for Bulls. Here is a 17 required from 2 balls for Brothers. Here we go. This time lofted and opportunity for the catch. Catch has been taken. Now, last ball remaining. Just a formalities left in this game. Just a formalities left in the game for the team Skyhawk. They will definitely going to celebrate this victory. They will take this level of confidence into that qualifier number 2. Because they are the one playing that qualifier number 2 against team the Bulls. So that I request all the players of both the teams, please little correction now. I think I request Mighty Bulls players, please complete your signatures. Mighty Bulls, I request please complete your signatures as soon as possible. Now last ball remaining, 17 runs required. High up in there, catch it is a call. Will it go into be one more wicket here? Yes. Sujay has been outstanding in his bowling performance throughout the tournament. Again, he bowled a very good last over for his team. Congratulations for Skyhawks. They won this match by 16 runs against Brothers, and they are through to the qualifier number 2, and they will go into play against Mighty Bulls to get the place in the mega final.
ಆಡಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ, ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಇಂದಿನ ದಿವಸದ ಆಟ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಆಡಿದಂತ ನೆನಪನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದು ಅನುಭವವನ್ನು ಇಂದಿನ ದಿವಸ ತೋರ್ಪಡಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಸುಜಯ್, ಎಸ್ ಸುಜನ್ ಎಂಬ ನಾಮಕರಣ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಜನ್ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇಂದಿನ ದಿವಸದವರೆಗೂ ಆಡಿದಂತ ನೆನಪು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಸುಜನ್. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ರೆಟ್ಟಾಮ ಅವರದ ಮುಖೇನ ತೀರ್ಪು ದಾಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ನೋಡಿ ಶರವೇಗವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ತಪ್ಪಿದಂತ ದಾಳಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡೆ ಮನುಷ್ಯನೇ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಹದ್ದಿನ ಗಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸುರೇಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೋರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರಂತ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್ ಇವರಂತೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಗುರಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹರೀಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ನೇರವಾದ ಗುರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಚುರುಕಿನ ಒಂದು ಗುರಿ ಎಂದು ಬಿದ್ದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅನುಭವದ ಆಟ ತೋರ್ಪಡಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2ರ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಸ್ಕೈ ಹಾಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಮೈಟಿ ಬುಲ್ಸ್. ಯಾರಿಗುಂಟಿದಂತ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ತಂಡ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥವಾಗಲಿದೆ. ಕೊಟ್ಟಾರಿ ತತ್ವಮಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಥಮ ತಂಡವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆಯನ್ನಿಟ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ವರ್ಗತಾನ ಆರಂಭಿಕ ತಂಡದ ಪ್ರಥಮ ಉದರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 1 ಬೋಟ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ 1 ಉದರ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಎಸ್ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಜನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಅಲೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರ್ಯ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 1 ಬೋಟ. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ರಾಕೇಶ್, ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬ್ಯಾಟರ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯತಿನ್. ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ದಂಡಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ 1 ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಿಸಲು ಬಂದೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಜನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಲಯಬದ್ಧ ದಾಳಿ ಶರ ವೇಗವಾಗಿದ್ದು ಚೆಂಡು ನೇರವಾದ ಗುರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಂತೂ ಲೆಗ್ ಬೈ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆಯನ್ನು ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ಒಂಟಿ ಬೋಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಖಾತೆಗೆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ 1 ಉದರ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಜನ್ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಎಸೆತಗಾರ. ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಂತೂ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಸ್ವರ್ಗದಾನ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸುಜನ್ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಧರಿಸಿದ್ರು. ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಕಾಟ್ ಔಟ್ ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪನ್ನೊಂದು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇದಂತೂ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾಟ್ ಔಟ್ 24 ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ. ಸುಂದರತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಪದೇ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಇಂದಿನ ದಿವಸ ನೋಡಿದರೆ ನೋಡಿ ಎಂದೇ ಒಂದು ನೆನಪು. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸೋತರೆ ನೇರವಾಗಿ ಮನೆಗೆ, ಆಡಿದಂತ ಅನುಭವ ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದರ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ. ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರದೀಪ್ ರವರ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಳನೆ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 2 ಉದರ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ. ಎಸ್ ಸುಂದರದಾಗಿದ್ದು ಚೆಂಡು, ಅದರ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅತಿರಿಕ್ತ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುತ್ತಾ. ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 3 ಓಟ, 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ, 2 ಉದರ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಸುಜನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಜನ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ. ಲಯಬದ್ಧವಾದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದಂತೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಜಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 balls are left. ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ವೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ವೈಡ್
leg bys, wickets. 4 balls are completed. 3 on the board for the loss of 2 wicket. Yes, కొంచెం మట్టిన ತೀರ್ಪುಗಾರರಂತೂ ಇದರಲ್ಲಂತೂ ಬರಹಗಾರರಂತೂ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂದು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸುಜಿತ್ ಅನುಭವಿತ ಬರಹಗಾರಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಾಗ 18 ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಸುಜನ್ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಶರಬೇಗ ದಾಳಿ. ಸುಂದರದಾಗಿದ್ದು ಚೆಂಡು ನೋಡಿ, ಆದರೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ವಯಸ್ಸು ಮುಖೇನ ಅತಿರಿಕ್ತ ಖಾತೆಗೆ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 4-5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ, ಕೊನೆ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಎಸ್, ಪಂಚಮ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿನ್ನೆಯ ದಿವಸದಿಂದ ಇಂದಿನ ದಿವಸವರೆಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿದಂಥ V4 ನ್ಯೂಸ್ 24/7 ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವದ ದಾಳಿ. V4 ನ್ಯೂಸ್ 24/7 ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಮಗದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ. ಸುಂದರದಾಗಿದ್ದ ಚೆಂಡು, ಆದರೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಸ್ವರ್ಗದಾನ, ಆರಂಭಿಕ ಸ್ವರ್ಗದಾನ ಒಂದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 5-2 ಉದರ್ಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನು ಕೂಡ 3 ಓವರ್ ಬಾಕಿ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಕ್ಕಂಥದ್ದು. 18 ಚೆಂಡು 30 ಓಟ ಗಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಾಣಸಿಗಬಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. 18 ಚೆಂಡು ಬಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಕ್ಕೆ 5-2 ಉದರ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 03 ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಶಿವರಾಜ. ದಂಡಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಶಿವರಾಜ್ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ದಟ್ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅನುಭವದ ದಾಂಡುಗಾರ ಶಿವರಾಜ ಈಗಾಗಲೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಶಿವರಾಜ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಡಕೈ ದಾಂಡುಗಾರ ರಾಕಿ ಇರೋವರೆಗೆ ಶಿವರಾಜ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಾಕಿ ಇರೋವರೆಗೆ ಠಾಮ ರೊಂದು ಮುಖೇನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗಂತೂ ಸುಂದರತೆ ದಾಳಿ. ಯಾವುದೇ ಓಟ ಕಂದು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿ 5-2 ಉದರ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸದಗಾರ ಶಿವರಾಜ್ ಎಸೆಪಿಗಾಗಿದೆ ಟು ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಾಕಿ. ಶಿವರಾಜ್ ಎಸೆಪಿಗಾಗಿದೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಾಕಿ. ಸುಂದರತೆಯಾಗಿದ್ದ ದಾಳಿ, ದಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ. ಇದಂತೂ ಎಸ್, ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಿವರಾಜ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ಟಮೋ ಓವರ್ದ ಮುಖೇನ ನೋಡಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ತಣಿಸಿದ್ರು. ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿಗೆ ಕರೆ, ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ರಾಕೇಶ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೊಂದು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷರಾಗುತ್ತಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 7 ಓಟ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಸತಗಾರ ಶಿವರಾಜ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೆಟಾಮ ಶಿವರಾಜ್ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ರೆಟಮ್ಮ. ಒಂದು ಮುಖೇನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ದಾಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಾಕಿ ಅವರಿಗೆ. ಶಿವರಾಜ್ ರಾಕಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ತಂಡನೆ ನೋಡಿ. ಸುಂದರದಾಗಿದ್ದು ಹೊಡೆತ. ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ 8 ಓಟ 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಇದಂತೂ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು, ಯಾರಾಗಬಹುದು ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್? ಕೊಟ್ಟರಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗಿನ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ತಂಡವಂತೂ ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್
ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡಿ ಶರ ವೇಗವಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಇದಂತೂ ಉದ್ದರಿಯ ನೆಲ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ರೂಪ. ಸುಂದರತೆಯಾಗಿದ್ದು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ನಿರಾಶರಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ಕೈ ಹಾಕ್ಸ್ ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರ ಯತಿರಾಜ್ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ನಿರಾಶರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅನುಭವದ ದಾಳಿ ಅಂತೂ ನೋಡಿ ಶಿವರಾಜ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭವದ ಆಟಗಾರ. ಇದಂತೂ ಅನುಭವದ ದಾಳಿ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿವಸದಿಂದ ಆಡಿದಂತ ನೆನಪು ಇಂದಿನ ದಿವಸದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಆ ನೆನಪನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅನುಭವದ ಆಟ ತೋರ್ಪಡಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 8, 3 ಉದರ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶಿವರಾಜ್ರವರೇ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. 1 ಉದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ ಇವರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. ಶಿವರಾಜ್ರವರೇ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2 ಓವರ್ ಮುಖೇನ ಸುಂದರತೆ ದಾಳಿ, ಸಾರ್ವವೇಗತೆ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದು ಚೆಂಡು. ಅದು ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಲಗ್ವೈ ಮುಖೇನ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 9 ಓಟ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. 3 ಉದರ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ಇದಂತೂ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಸ್ಕೈ ಹಾಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಮೈಟಿ ಬುಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಂಚಿಮೆನ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಮೈಟಿ ಬುಲ್ಸ್ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಂಚಿಮೆನ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ 60% ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುವಂತಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ ನೋಡಿ. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. 9, 3 ಉದರ್ಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಿಶೋರ್ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಿಶೋರ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಡೆಡ್ ಬಾಲ್. ಅಂಪೈರ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ಮುಖೇನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಿಶೋರ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸುಜಯ್. ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿ ನೋಡಿ. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೋಟುಗಿದ್ದು ನೋಡಿ ಸುಜಯ್. ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. 10, 3 ಉದರ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಂತೂ ಮುಕ್ತಾಯ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಕಿಶೋರ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೆಡ್ ಆರ್ಮರ್ ಒಂದು ಮುಖೇನ ತನ್ನ ಗಾರ್ಡನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಾಕಿ ಇರೋಬರೇ ದಂಡಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. 10 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡೊಂದು ಮುಕ್ತಾಯ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಕಿಶೋರ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿಗೆ ತಿರುಬಾರ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 11 ಓಟ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕಿಶೋರ್ ಸುಂದರತೆಯಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿ. 1 ಬೌನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಟು ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಕೀಪರ್. ಅನುಭವದ ದಾಳಿಯನ್ನಂತೂ ಕಿಶೋರ್ ಲಯಬದ್ಧ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. 11, 3 ಉದರ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಕಿಶೋರ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಟು ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಾಕಿ. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ದಂಡಿಗೂ ಚೆಂಡಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆಂದು ನೋಡಿದ್ರು ರಾಕಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕೇವಲ 11 ಓಟವನ್ನು ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ 3 ಉದರ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದಂತೂ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟವಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ. ಆಡಲೇಬೇಕಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ, ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸೋಲು ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಾಲು. ಇಂದಿನ ದಿವಸದ ಸೋಲು ಮುಂದಿನ ದಿವಸದ ಗೆಲುವು ಯಾರಿಂದಲೂ ಹೇಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ
ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿ ಈ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. 12-3 ಉದರೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಕಿಶೋರ್ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಯಬದ್ಧವಾದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಗಾರ್ಡನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಟಾಮ ಓವರ್ ದ ಬೊಕೇನ ದಾಂಡುಗಾರ ಸುಜಯ್ ಇರೋವರಿಗೆ. ಸುಂದರದಾಗಿದ್ದು ದಾಳಿ. ಇದಂತೂ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಟ್ಟರವಾದ ಚೆಂಡು. ಶರವೇಗವಾಗಿದ್ದು ಚೆಂಡು. ಆದರೆ ದಾಂಡುಗಾರನಂತೂ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ನಿರಾಶರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಕೈ ವಾಕ್ಸ್ ನ ದಾಂಡುಗಾರರು. ದಂಡಿಗೆ ಚೆಂಡಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. 12-3 for the loss of 3 wicket after the completion of 2.5 balls. Last ball in the progress of ಕಿಶೋರ್. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಕಿಶೋರ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಂಡುಗಾರ ಸುಜಯ್. Last ball in opposite corner. It a over the wicket. Juicy ball. I think he just wanted to loft it. It was outside the leg stick delivery. And wide extra more runs are at the scoreboard. Score moves on to 14 on the board for the loss of 3 wicket after the completion of 2.5 balls. 2.5 overs. And Kishore, you have to manage his bowling style because just a lot of extras are given in this over. You have to bowl in off his mark, crossing the umpire, right arm, round the wicket to the batsman Raki. Kishore to Raki. Last ball, he tried to loft it, but excellent bowling in the figure. And over number 3 completed, 14 for the loss of 3 wicket after the completion of 3 overs. I think the toss was won by the time of mighty Kottary mighty bulls. They were just planned to stop the score before reaching 20 runs in the first innings. They are being a little bit of successful in this innings, so that 14 on the board for the loss of 3 wicket and 3 overs are completed. Last 1 overs are pending. I think Skyhawks batsmen, they just want a big hit. They want to clear the ground in the shot because 14 on the board for the loss of 3 wicket. Last over in the progress. First ball was excellent delivery there. Look at that ball. And chance of an out. He just wanted to hit the ball to the direct to the stumps. And it was an unfortunately good running between the wicket. 15 on the board for the loss of 3 wicket after the completion of 3.1 over. Second Bharat in opposite count, crossing the umpire. Third jersey, 3 jersey number Tama around the wicket to the batsman Raki. Bharat to the Raki, Tama on the wicket. And it's a huge match is going on here. Qualifier number 2 between Skyhawks and mighty Kottary mighty bulls. Good shot, driven into the cover position. 1 completed, calling for second, and Raki won the second one, and they were trying for decision. I'm waiting for the decision of umpire. Yes, not out, it's a call. Yes, Raki just wanted to rotate the strike into the second run. He just ran successfully and completed the second run. A couple of runs are at the scoreboard, even though there are 17 on the board for the loss of 3 wicket after the completion of 3.2 overs. Third time Bharat. As the replay was going on there, just a good appeal was going on there by the players. Even though the umpires, they are brilliant in their umpiring side. Just not out call by the umpire. Yes, the time in opposite count to Bharat, crossing the umpire at around the wicket to the batsman Raki. It's a bowling style that is Bharat. You have to bowl for third time, crossing the umpire right arm. Round the wicket to the batsman Raki. Bharat to Raki, third time. You have to bowl very well bowling in the situation because 17 runs are on the scoreboard. Good piece of bowling. He just struck down into that long on position. 1 completed. Even though they're trying for second, but the second run has been run there. Chance of run out, and a couple of runs are also completed. Good running between the wicket. Couple of runs completed. 19 on the board after the completion of
3 balls of the of the fourth over for the loss of 3 wicket. Yes, time out. Time garantullama. Aithe mitti full vachi. Yes, time out call by the umpire. One fielder from the outside 30th circle have to enter. Outside the 30th circle have to enter the inside the 30th circle. Just wanted to strike the ball, even though they're not connected successfully into the bat. It is not connected there. Just 3 balls are completed. 19 on the board for the loss of 3 wickets. Sorry, 4 balls are completed. Sorry there. 4 balls are completed. 19 on the board. Good piece of bowling, excellent bowling. Look at that deliver. He's bowling a magnificent line and length in that movement. Good piece of line and length is following there. And 20 on the board. 5 balls are completed. Last 1 balls are remaining of the first innings. Last 1 to go. Bharat, right arm over the wicket, crossing the umpire to the batsman Sujay. Last ball, couldn't change the Bharat. Have to ball now, Bismarck. Good piece of bowling, excellent delivery, chance for an out, and yes, it's given by the umpire. 1 more wickets are fallen on. Score moves on to 20 on the board. 21 is target for the loss of 3 wicket. Yes, the second innings, ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವೀರಗಾರನಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವೀಕ್ಷಕ ವೀರಗಾರರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಡಂತ ಅನುಭವಿತ ವೀಕ್ಷಕರಾದ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಕ ವೀರರ ಮಂದಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂದ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಅನುಭವಿತ ವೀಕ್ಷಕ ವೀರಗಾರರು ಇದಂತೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಡಂತ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವೀಕ್ಷಕರಾದ ಸತೀಶ್ ಹಾಗೂ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಇಂದಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ. Thank you, Mr. Chiraga, for your excellent commentary in state language, sweet language, Kannada. Now, straight away coming back to the qualifier match number 2, the second session is now going to begin, and 21 the target for
So 20 on the target, and the innings now going to start, and 4 overs game, and exactly 5.25 runs required run rate for Mighty Bulls to qualify for the grand finale of this competition. And their innings now going to start. Their openers are the crease are Sukesh and Sujan. Meantime, the bowler starts a fresh proceedings. Is Rakesh. The first ball of their innings is now coming up. पहली गेंद लेकर तैयार. इस बार स्टीयर किया गेंद को थर्ड मैन की दिशा में गेंद पहुंचे और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता. एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है कुपी और एक रन के इजाफे के साथ रन स्कोर बिगिन फॉर देम. एक रन बिना किसी नुकसान के. और जहां तक सवाल है 21 रनों का, तो इस वक्त एक बेहतर शुरुआत की जरूरत है यहां पर माइटी बुल्स के बल्लेबाजों को. एक बेहतर और जहां तक सवाल है इस वक्त कोटारी स्काई हॉक्स के गेंदबाजों का, तो एक घातक गेंदबाजी की जरूरत राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर उनके लिए. ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा. गेंद पहुंची शॉट फाइन लेग पर. मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट हिम वन ऑफ देम बैक इनटू द पेविलियन एंड दैट इज द विकेट नंबर 1. सुकेश रन आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए. देखिए किस तरीके से हुआ था. हैव अ लुक एट दिस इन द रीप्ले. गेंद पहले दौड़े थे सुकेश, लेकिन उसके बाद दौड़े स्ट्राइक रन के बल्लेबाज. थोड़ी सी झिझक दोनों बल्लेबाजों के बीच में और आखिरकार यहां पर रन आउट होता हुआ स्ट्राइकर एंड पर सुकेश की पारी समाप्त. और पहला विकेट गिर चुका. इट्स 1 for the loss of 1 wicket. Quick piece of work made by wicket keeper after receiving the ball, just flicking the wickets, and that is the wicket number 1. It's 1 for the loss of 1 wicket in the over number first. और नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त होता हुआ. न्यू बैट्समैन नंबर 3 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, भवित. और वो इस वक्त सामना करेंगे गेंदबाज की ओवर की अगली गेंद का. तो गेंदबाज इस वक्त राकेश गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए. क्वालिफायर मैच नंबर 2 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट कोटारी प्रीमियर लीग सीजन 5 2024 के अंतर्गत खेला जाता हुआ. यह गेंद हल्के से गेंद को पुश किया. एक्स्ट्रा कवर पर रन के लिए दौड़ पड़े. नजदीकी मामला हो सकता है, लेकिन थ्रो थोड़ा सा वाइडर और इस वजह से बल्लेबाज एक रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. इट्स 2 for the loss of 1 wicket इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. और इस बीच राकेश अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए. ये गेंद फैंटास्टिक डिलीवरी एंड ही जस्ट गॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन. This is a master class bowling. Absolutely much straighter line. The batsman wanted to break that one. It's got a gap between his bat and leg, and the ball passed in that gap and stuck to his middle of stump. Bills are disturbed. Oh, that is an absolutely fantastic delivery. Just look at it in the replay. The ball went very sharply after defeating the batsman's bat and stuck to his middle of stump. Bills are disturbed, and because of that fantastic delivery, the batsman Rakesh got the break. The bowler Rakesh got the breakthrough. Sujan the man dismissed for 0, and now they are looking in trouble a little bit. 2 रन पर 2 विकेट यहां पर खो चुका है. Mighty Bulls are now looking in trouble a little bit. So number 4 batsman is now coming out to the middle is Shivaraj. Number 4 batsman is now coming out to the middle to joining the other batsman भवित. और यहाँ पर जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का, तो पहले ओवर में काफी बेहतर गेंदबाजी इस वक्त करते हुए राकेश अब तक 1 विकेट प्राप्त कर चुके. 1 विकेट रनआउट के रूप में गिर चुका है और यहाँ पर ऐसे गेंदबाजी की जरूरत है स्काई हॉक्स के गेंदबाजों को. अगर उन्हें 20 रनों के अंदर माइटी बुल्स के बल्लेबाजों को रोक कर रखना है तो. और इस बीच गेंदबाज राकेश अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद को उछालना चाहा. गेंद पहुंची इस वक्त पॉइंट पर और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता. 1 रन का इजाफा लेग बाय के रूप में और लेग बाय की इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 3 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. और अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज राकेश तैयार. बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद. ये गेंद हल्के से गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ स्क्वायर लेग की दिशा में और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता. 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. So a successful over came to an end from Rakesh, who conceded just 4 runs and got the wicket of Sujan, and Sukesh was on out. And the first over after first over chasing the victory target of 21 in 4 overs. Mixed start for Mighty Bulls. It's 4 for the loss of 2 wicket after completion of first over. Winners of this match will meet Kottary Tatwamasi in the grand finale of this competition, and that final match will be played right after this qualifier number 2 match.
यतिराज गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दूसरा ओवर शुरू होता हुआ 24 गेंदों में 6 गेंदें जा चुके हैं, 18 गेंदें बाकी और रन चाहिए 17, 17 रिक्वायर्ड इन रिमाइनिंग 18 डिलीवरीज. इट कुड बी एनीबॉडीज गेम एट दिस सिचुएशन. और गेंदबाज इस वक्त तैयार अंडर लाइट्स. ये एक बेहतर स्कोर कहा जा सकता है अगर गेंदबाज अपनी सही लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हैं तो. और इस बीच गेंदबाज ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी. फैंटास्टिक डिलीवरी. गेट सम एक्स्ट्रा बाउंस जस्ट मिसिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप और गेंद से सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. 17 गेंदें बाकी, 17 रन चाहिए. 17 टू गेट फ्रॉम 17 डिलीवरीज. और अगली गेंद, ये गेंद उछाला गेंदबाज के सिर के ऊपर से स्ट्राइट ऑफ द ग्राउंड, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद. थोड़ी सी मिसफील्ड और इस मिसफील्ड का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने 2 रन यहां पर पूर्ण कर लिए. अंतिम क्षण में कुछ हद तक हड़बड़ाहट हुई और इस हड़बड़ाहट में गेंद उनके हाथों से छूटी और आखिरकार इस छूट का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने 2 रन प्राप्त कर लिए. 6 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर. 15 टू गेट नाउ इन रिमेनिंग 16 डिलीवरीज. और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. यह गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा शॉर्ट थर्ड बैट पर. इस बार एक बार फिर से मिसफील्ड, लेकिन इस बार सिर्फ 1 रन जरूर मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. 7 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. स्टिल द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर. Qualifier match number 2 of this prestigious cricket tournament, Kottary Premier League season 5 2024 is now progressing here, which proudly presented by Kottary Yuva Vedike. और under lights this match is now progressing here. जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाज यतिराज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और इस बीच फील्डिंग में जमावट करते हुए विकेट कीपर इसे देखते हुए गेंदबाज ने अपने रनअप को रोक लिया और फिर से एक बार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए बेहतर गेंद थी. मत स्ट्रेट लाइन, धीमी गति की गेंद उछालना चाहा था, चूंकि गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए और आखिरकार डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ. 14 बॉल्स लेफ्ट, 14 रन्स रिक्वायर्ड और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद इस बार चूके अगेन अ डॉट डिलीवरी एंड दिस इज टर्निंग आउट टू बी वन मोर गुड ओवर सो फार इन Skyhawks point of view. 2 consecutive dot balls for the lefty batsman. यतिराज जो कि स्वयं कप्तान है Skyhawks के, अपनी जिम्मेदारी गेंदबाजी में इस वक्त बाखूबी अदा करते हुए. अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी और इस वक्त शिवराज सामना करने के लिए तैयार. ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया जगह बनाते हुए वाइड लॉन्ग ऑफ पर. नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 8 रनों पर. सो 2 tidy overs bowled by the bowlers of Skyhawks and after 2 overs score is now 8. Comparison stands on the same. So 8 for the loss of 2 wicket. Meantime Skyhawks also scored 8 runs in the first 2 overs. So the equal battle is now continuing here and let's straight away coming back to the equation. 13 to get from 12 deliveries, exactly 6.5 runs per over. The required run rate for them and still they got 8 wickets kept intact. 8 विकेट सुरक्षित, 12 गेंदों पर 13 रन चाहिए. What is the prediction? So right, back to the third over of their game. 13 required. मनोज द बॉलर इज नाउ ब्रॉट इनटू द अटैक. मनोज नया ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई. काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र क्षण में यहाँ पर दिखाई देता है. डीप बैक स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट इस वक्त मौजूद और लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ डीप कवर पॉइंट इस वक्त कुछ हद तक सीधे तैनात. और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार. मनोज दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद चिप किया इन द एयर स्ट्राइट इनटू द हैंड्स ऑफ फील्डर. हाफ माइंडेड स्ट्रोक और गेंद इस वक्त पहुंचे सीधे एक्स्ट्रा कवर फील्डर के हाथों में. आसान सा कैच और यहां पर यह विकेट गिर चुका है. नाउ आई मस्ट से माइटी बुल्स आर नाउ लुकिंग इन ट्रबल. 8 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स. 8 for the loss of 3 wicket and in these critical circumstances the man called
experienced campaigner of their side. Pradeep Kottary is now walks out to the middle. प्रदीप कोट्टारी का आगमन इस वक्त होता हुआ और देखते हैं प्रदीप कोट्टारी के पास जो अनुभव है इतने सालों का, उस अनुभव का किस तरह वो अनावरण करते हैं इस मैच में। और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। तो गेंदे बाकी हैं 11, रन्स चाहिए 13, 13 to get from 11 balls. It could be anybody's game at this situation. और मनोज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए और गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रदीप कोट्टारी के लिए अगली गेंद। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ मोड़ दिया। इस वक्त प्रदीप कोट्टारी ने फील्डर थोड़े से पीछे तैनात, एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। ऑफ द टोस, जस्ट फ्लिक दैट वन ऑफ द टोस ऑन टू अ मिड विकेट फॉर अ सिंगल। और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 9 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 12 टू गेट फ्रॉम 10 balls now. What a match. Qualifier match number 1 of this prestigious cricket tournament is now progressing here. The equal battle is now continuing here. और इस बीच गेंदबाज मनोज गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, लेग स्टंप से बाहर, शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद पहुंची, रन के लिए दौड़ पड़े, वाइड का इशारा। So wide declared by umpire and now the tide is slowly turning. Now 10 to get from 10 deliveries, 10 गेंदे और 10 रन चाहिए। और इस वक्त तख्ता कुछ हद तक पलटता हुआ। और देखते हैं पिछले गेंद पर मनोज ने जो लेग स्टंप से कुछ बाहर की ओर गेंद फेंकी थी, निश्चित रूप से उनके लिए इस वक्त महंगा पड़ता हुआ। और इस बीच गेंदबाज मनोज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हैं। प्रदीप इज नाउ बैक ऑन स्ट्राइक और मनोज की ये गेंद इस वक्त, दिस इज एन स्लॉपी, दिस इज एन एब्सोल्युटली स्लॉपी, गॉन टू फॉर सिंगल, दिस टाइम ही वोंट सर्वाइव, ही लॉस्ट हिज विकेट. But a wide declared by umpire, 1 wicket lost and a wide run added. The things getting easier a little bit at this situation for Mighty Bulls now, and now 9 required and 10 balls remaining. Bhavit the man dismissed. So 4th wicket down, 12 for the loss of 4 wicket. 12 रन 4 विकेट के नुकसान पर भवित का विकेट गिर चुका है, लेकिन 1 रन वाइड के रूप में जरूर मिल चुका है यहाँ पर माइटी बुल्स को। और 9 रन चाहिए, गेंदे बाकी हैं 10। तो निश्चित रूप से दबाव इस वक्त दोनों टीमों के ऊपर साफ दिखाई देता हुआ। द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स। और भरत इस संदिग्ध मोड़ पर नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, और इस बीच सामना करने के लिए तैयार मनोज की गेंदों का। तो फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त चलते हुए, दोनों टीमों के समर्थक सपोर्टर्स अपनी टीम का मनोबल बढ़ाते हुए इस वक्त तालियों के साथ, सीटियों के साथ। और मनोज की ओर की अगली गेंद, ये गेंद फुल टॉस, गेंद को इस वक्त खेल दिया मिड विकेट पर, फील्डर थोड़े से पीछे तैनात, 1 रन मिलेगा, क्लीन पिकअप, नॉट मोर देन अ सिंगल। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 13 रनों पर। 9 balls लेफ्ट, 8 रन नीडेड। और मनोज इस वक्त प्रदीप कोट्टारी जो स्ट्राइक पर आ चुके हैं, उनके लिए इस वक्त दाहिने हाथ ओवर द विकेट ही गेंदबाजी करेंगे। फील्डिंग का मुआयना इस वक्त करते हुए, और 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। इस श्रृंखला के इस टूर्नामेंट के नियमानुसार मिड विकेट, शॉर्ट फाइन लेग, पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर इस वक्त मौजूद। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट मनोज गेंदबाजी करते हुए प्रदीप के लिए अगली गेंद लेकर तैयार, रिवर्स शॉट खेलना चाह, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, रन आउट का खतरा, और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। Unnecessary running between the wicket cost one of them back into the pavilion. प्रदीप कोट्टारी ने रिवर्स शॉट खेलना चाहता, देखिए रिप्ले में, चूंकि शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद पहुंची, रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन इससे पहले कि स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज पहुंचे, नॉन स्ट्राइक रेंज के विकेट कीपर के हाथों में थ्रो पहुंचा और विकेट कीपर ने अपना काम तमाम किया। अब 8 of 8, 8 गेंदे बाकी और 8 रन चाहिए विजय के लिए। निस्संदेह कांटे का टक्कर जो कि हमें इस मैच में देखने को मिल रहा है। और प्रदीप कोट्टारी ऑफ द स्ट्राइक इस वक्त हो चुके हैं। किशोर इस वक्त स्ट्राइक रेंज की ओर कदम बढ़ाते हुए, और वो इस वक्त सामना करेंगे मनोज की गेंदों का। देखिए टीवी मॉनिटर पर इस वक्त दिखाया गया 8 गेंदे 8 रन, 8 of 8 deliveries. What a fantastic match is now progressing here. The pressure is now building up on both sides.
विजय के लिए कड़ा संघर्ष यहां पर जारी है। और इस बीच मनोज नए बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद किशोर के लिए, इस बार गेंद हमें में, लेकिन कोई फील्डर वहां पर नहीं। और ऐसा कहना पड़ेगा गेंद की उछाल को समझ नहीं पाए। हाफ माइंडेड स्ट्रोक इस वक्त खेला था, लेकिन गेंद हमें में जरूर थी, लेकिन खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाते हुए। अब 7 रन चाहिए, 7 गेंदें बाकी, 7 ऑफ 7। तो इस वक्त अंतिम गेंद लेकर तैयार। इट कुड बी एनीबॉडीज गेम एट दिस सिचुएशन। और गेंदबाज मनोज इस वक्त तैयार। प्रदीप कोठारी जो कि सामना करते हुए मनोज की गेंदों का, ये गेंद इस बार मनोज के लिए, इस बार प्रदीप के लिए गेंद को हल्के से मोड़ दिया कलाइयों के सारे। इस वक्त मिड विकेट पर 1 रन के लिए। और इसी के साथ 15 for 5, 3 overs completed, 6 to get from last 6 deliveries. So 6 of 6, and now it could be anybody's game at this situation. और प्रदीप कोठारी इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, जबकि सुजय मैच निर्धारित ओवर लेकर इस वक्त गेंदबाजी पर उतरते हुए। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए। तो 6 गेंदे 6 रन, 6 of 6. The equation stands for Mighty Bulls. फर्स्ट बॉल, पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, सुजय की गेंद, और इस बार गेंद को डेड घोषित किया गया है यहाँ पर अंपायर रोलन पिंटो द्वारा अंतिम अक्षर में। और आखिरकार एक बार फिर से गेंदबाज सुजय गेंदबाजी शुरू करते हुए। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रदीप कोठारी के लिए 6 गेंदों पर 6 रनों की जरूरत है। ये गेंद इस बार प्रदीप कोठारी के लिए रिवर्स शॉट के लिए इम्प्रोवाइजेशन करते हुए रन के लिए दौड़ पड़े। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। 5 balls 5 runs। और निश्चित रूप से एक बेहतरीन मैच, क्वालिफायर मैच नंबर 2 इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है। दर्शक काफी खामोशी के साथ मैच का आनंद इस वक्त लेते हुए। और इस बीच किशोर सामना करने के लिए तैयार सुजय की गेंदों का। सुजय गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया है। किशोर ने गेंद पहुंची इस वक्त मिड विकेट पर, फील्डर दौड़ कर रहा है इस वक्त। दूसरे के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े प्रदीप कोठारी। किशोर के लिए खतरा पैदा हो सकता है, लेकिन विकेट कीपर यहाँ पर विकेट चटकाने में असफल, थ्रो को ठीक तरह से रिसीव नहीं कर पाए। और इस बीच बल्लेबाज दूसरा रन पूर्ण कर चुके हैं। तो थ्रो वहां पर पहुंचा था, और यहां पर थ्रो पहुंचा स्ट्राइकर एंड पर। शायद विकेट कीपर ठीक तरह से गेंद को गैदर नहीं कर पाए, गेंद उनके आगे टिप्पा गए थे, और इसका फायदा उठाकर बल्लेबाज ने दूसरा रन सफलतम पूर्ण कर लिए। अब इक्वेशन कुछ हद तक आसान होता हुआ। 3 to get from 4 deliveries. तो विजय लक्ष्मी हमेशा चंचल होती है, लेकिन यहां पर देखते हैं चंचल होने के बाद किसके गले में वो गिरती है। तो इस बीच गेंदबाज ये गेंद ऑफ, ओह दिस इज एन स्लॉपी, दिस इज एन एब्सोल्युटली स्लॉपी। और नो बॉल इन फैक्ट, एंड इट्स अ फ्री हिट डिलीवरी। तो यहां पर फ्री हिट इशारा कर चुके हैं अंपायर। अब ऐसा कहना पड़ेगा पहली बार इस मैच में माइटी बुल्स का तख्ता भारी लगता हुआ। Just 2 runs to get from 4 balls now, and a free hit delivery for the batsman Kishore. और इस बीच द बॉलर स्ट्रेट अवे अंडर प्रेशर। सुजय अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, विकेट कीपर पहुंचे, रन के लिए दौड़ पड़े, और इस रन के साथ स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड। Scores are now leveled. Also, they exceeds the time limit, so one fielder have to brought inside the 20-yard circle now. 3 balls, 1 run required. And at this situation, Mighty Bulls are looking right on top. अब ऐसा कहना पड़ेगा कुछ घातक गेंदबाजी ही इस वक्त स्काई हॉक्स को इस मैच में टाई करने में सहकारी बन सकती है।
और प्रदीप जो कि एक वक्त के जाने माने बल्लेबाज खिलाड़ी माने जाते थे अंडरआर्म के, इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन चाहिए। और इस बीच गेंदबाज सुजय गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। Here we go. 1 of 3, and this time that's it. In fact, oh, this could be trouble. This could be trouble. Pradeep Kottary departs. He is now departs. गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहा था, लेकिन ठीक तरह से खेल नहीं पाए. Have a look at this in the replay. दौड़ा, 3 कदम आगे दौड़े. देखे कि विकेट कीपर पहुंच चुका है. डाइविंग इस वक्त डायरेक्ट हिट लगाई थी और इस बार गेंद स्टंप्सों को बिखेर कर जाता हुआ. प्रदीप कोट्टारी की पारी समाप्त. 6th wicket down. And now it's 20 for the loss of 6 wickets. 2 balls remaining. Still 1 run required. तो इंतजार है इस वक्त नंबर 8 बल्लेबाज का, और देखते हैं इस वक्त कौन सा बल्लेबाज नंबर 8 बल्लेबाज के तौर पर मैदान पर उतरते हैं. जितेश इज द बैट्समैन, इज द कम्स आउट टू द मिडल. अगर ये गेंदबाज अगर डॉट करते हैं सुजय, तो निस्संदेह यहां पर मैच में कशिश और बढ़ जाएगी. तो 2 गेंदें बाकी, 1 रन चाहिए और दबाव इस वक्त दोनों टीमों के ऊपर साफ बढ़ता हुआ. क्लोजिंग फील्डर, हियर वी गो. दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद इस बार गेंद को खेला, मिड विकेट पर गेंद पहुंची, रन के लिए दौड़ पड़े. दैट्स इट. Mighty Bull are through to the grand finale of this competition, defeating Skyhawks in a thrilling encounter with just 1 ball to spare by 4 wickets, and with that victory they are through to the grand finale of this competition. What a fantastic match ended. And now grand finale, mega final of this prestigious cricket tournament, Kottary Premier League Season 5 2024, which proudly presented by Kottary Yuva Vedike. So will be played between Kottary Tatvamasi versus Mighty Bulls, and that final match is now coming up live and exclusively right in front of you within just short while. And till then we are taking short break, and we'll be back right after the short break with my friend Satish in English when the final match, grand finale of this prestigious cricket tournament, Kottary Premier League Season 5 2024 is now coming up right after the short break. Now it's time for break. Thank you. Dhanyavad.
ಹೀಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಧ್ಯಮದ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯದಿಂದ ಏಮಾತ್ರ ಮಾತು
I request the opening batters, please. So thank you very much, opening batters walking towards the middle for team Tatvamasi, and no change in opening pair, successful opening pair for Tatvamasi. Sujit walking towards the strikers and non-strikers, and Nishu with the jersey number 22. He will both are going to be opening batters. Just wanted to get some good start here for team Tatvamasi. And after winning the toss, captain of team Mighty Bulls, and it looks like they're happy to win the toss. Just they wanted to restrict the runs, but very, very difficult to tell how many runs is going to be enough to depend. But seeing that after the lights are on, it's a different ball game. It's not so easy to sight the ball. It's not like you are performing in the daylight. It's quite different when you're performing in the under floodlight. This time is a chance of run out. First ball itself, it's going to be very close, but batter is just have made it. The supporters of
Totvamasi, they got a heart in their mouth. Once it looks like the opportunity is created for the run out. But I think that extra cover fielder might be the throw which is where need to be have a direct hit. If it is a direct hit, I think it's all over for Nishu. And it looks like he's a little bit struggling as far as running between is concerned. It's quite understandable after playing a lot of matches. It's not so easy to maintain your level of fitness. Yesterday they played 3 matches. Today they played 3, another 3. And it's not so easy for any player to maintain the level of fitness. They have to deal with all these things. And at last they managed to complete that risky single. 1 without loss of any wicket. Sujan. This time what a delivery. Fantastically bowled outside the line of off-stamp, but beaten by the pace, isn't it? Just I mentioned earlier that it's not so easy to sight the ball. It's a different ball game when coming to that under floodlight. And ball absolutely came in such a pace that Nishu has got no opportunity to have any contact with that ball. Wicketkeeper behind the stump did the rest. Back to bowler. Short third man, backward point, short cover point, short mid-off. So very, very interesting field set, isn't it? Short fine leg, square leg behind the square, short mid-wicket and deep long on. And the deep long off are the fielders are in the deep. Sujan bows. This time one more fantastic delivery coming into the batter. Batsman have to play that one back to bowler. It's not so easy delivery to tackle with for any runs because that ball is almost targeting the midland leg stump of the batter and negotiated very well by the batter. The last moment he got played it defensively back to bowler. Good start there from the bowler. 1 without loss of any wicket. This time a reverse famous comes into play, defeats the fielder. Oh, that's a very good piece of fielding there by fielder. The young man down at short third man did a great job. That looks like and the batter just managed to send that one between short third man and the backward point region. But have a look at the effort that from fielder. He's got a hand onto that, saving boundary for his team. 2 without loss of any wicket in the over number first is in progress. This is going to be a wide. We need to avoid all these things because this is the only one match you can see that there is no excuse. The mega final. If you wanted to become a champion, they need to restrict all these extras. The 3 without loss of any wicket. Sujan. This time again, one more fantastic delivery. This time Sujit fails to make a contact with the bat. Missed it completely. Score remains on 3 without loss of any wicket. And a very good line and length in the negation, excluding that 1 wide in that over. This is turning out to be a good over. But job which is not yet over. 1 ball remaining. Right arm over the wicket bounce. This time again, that was a good delivery, just passing around the legs of the batter. Wicket keeping is out absolutely spot on there from Sukesh behind the stump. After completion of first over, team Tatvamasi just searching for the right track. But I don't think they're in the right track. They're only 3 on the board without loss of any wicket. This is what the difference between what we're talking about the morning to till evening before the lights are on. The runs are coming very freely. The high scoring games, 45 plus runs, even the 40 plus is chased down. But if you see that after that the lights are on and the batters started to feel the pressure. And there's something finding different in this pitch. The ball just reacting differently and a little bit hard time for the batter to bat on. Then the bowlers have started to dominate under floodlight. Shivaraj, the bowler will go into ball. That's an important second over of the innings of Tatvamasi, the very young talented bowler. Shivaraj, so far he bowled very well for his team, excluding that 1 match I still remember, that is in the qualifier number 1. It becomes a little bit expensive. Otherwise, he's bowled very, very economically throughout the tournament. Right arm over the wicket balls. Sujit wanted to go for the reverse sweep. Again, he missed it completely. Just wait for the umpire's signal. It's leg by. Again, the bowler will go into continue from the commentary box end. Shivaraj, second time in this over. To Sujit, one most destructive batter. This time, what a shot!
crashing that one down to deep extra cover, but not quite finding the gap. The very good field set there by the fielding team. Knows that Sujit is a good striker of the ball. He's keeping that extra cover in the right position. This is really a glorious shot, but unfortunately, Sujit will going to get single for that. The Wicket single scored numbers on to 5 on the board. Outstanding cricket tournament. We are talking about a live telecast of this cricket tournament, V424 into 7 channel. It has got a fantastic and very quality coverage. And most of the cricket lovers were enjoying the game of cricket, especially some unarmed cricket lovers. They are enjoying the game of cricket, not only in India, but outside India. Again, nicely driven down to deep long on. Look at the Ashu there. He's really struggling to run between the wicket. And just a single for him. Just talking about this cricket tournament, and not only in India, but outside the India. Especially, the interesting to say that there's some players, Deepak of Gori Young Boys, he's also watching the live telecast of this cricket tournament from Israel. If you believe me or not, some the cricketers are watching this unarmed cricket in Israel as well. This time catch, it is a call, and catch has been taken. Well, the long off fielder is absolutely got the golden opportunity to send the danger man Sujit back on strike, back into pavilion. This is a huge fish in the net. This is absolutely huge fish in the net. Have a look at that one. Batsman just wanted to play the inside-out cricketing stroke. I already mentioned that this is not an easy game under floodlight. Even Sujit is clearing big shots, big sixes in the daylight. But if you're coming into that under floodlight, we can see that even Sujit is struggling to get the distance, and he's back in the pavilion. 6 for 1, and Tatvamasi looks like they're under pressure now. The new batter in is absolutely the danger man walking towards the middle. Nikit, the man has got a potential of changing the complexion of the game. And I still remember his innings which he played in a qualifier number 1 against the same team. This is absolutely the action replay of the qualifier number 1. And condition which is a slight bit of different. And of course, playing in the qualifier number 1 and finals is a different ball game, different mindset. And now even Mighty Bulls also have got some game plan, how to stop the flow of the runs of team Tatvamasi. But this man is absolutely danger man. Shivaraj. This time, what we are talking about is a danger man, and straight away he sent a strong message to the opposition. He will not going to give this match quite easily for the opposition. But I don't think this is going to be a smart thinking from Shivaraj. I don't think, because he's balled outside the line of leg stump. It is absolutely one of the strongest zone. The strongest zone of Nikit. You can't do the mystic bowling outside the line of leg stump, and quite easily Nikit dispatched that one down to deep fine leg boundary for 4 runs. And scoreboard jumps into 10 for the loss of 1 wicket. Shivaraj again bowling away from us. Right him over the wicket. This time he wanted to play the reverse sweep. Again, when you are switched on, definitely bowlers can bowl outside the line of leg stump. And the right decision there from umpire Harish Padil. You can't give wide for that. And Nikit is not happy with himself that he wanted to go for the reverse sweep. But the 1 more over completed. And just coming back to this over, bowled by Shivaraj, excluding that boundary, he bowled really very well. Just 6 runs coming from that over of Shivaraj. After completion of over number 2, it's 10 for the loss of 1 wicket. And over number 2, which is comes to an end. The equal battle is on between these two champions team, and they are really played like a champion throughout the tournament and reserve the place in the mega finals. And now we need to wait another half an hour to see who will going to lift this prestigious Kottary Premier League Trophy 2024. This time, Kishore brought into attack. Oh, beautifully ball. Perfect one there from Kishore. And Ashu once again, his struggle time continues as far as the running between the wicket is concerned. So hardly managed to complete the run. Leg by call by umpire. So good bowling, good line again from Kishore there. Scoreboard is 11 for the loss of 1 wicket. Kishore away from us. Bowling
Right arm over the wicket delivers again. A lovely delivery indeed. Automatically done. Wicket keeper Sukesh appealing for stump out, but nothing wrong. Nothing much in that appeal. Just an excitement rather than the confidence. Nikit's back foot is absolutely safe. Have a look at that one, a replay. Even though it was automatically done, but no problem whatsoever. The back foot is inside the crease. Two very good deliveries to start with Kishore. One more beautifully bowled. Absolutely perfect one. This is good thinking from the bowler's point of view. Kishore knows that what Nikit is trying for. He's wanted to hit the ball in the onside region, so he knows that and why he was targeting that outside the line of off stump. Three very good deliveries, and only 2 runs came from that 3 deliveries. Now Ashu back on strike. And one more very good delivery. This time Ashu trying for the horizontal bat. Tried for the switch it, but missed it completely from the bat. One more single in the form of leg bye. So far it's a leg bye. We can see that 3 leg byes in this over. It's 13 for the loss of 1 wicket in the over number 3 is in progress. Again, a lovely delivery, and unfortunately there is no leg before wicket. Otherwise, he's fighting right in front of middle stump. A leg bye called by umpire. One more addition. Oh, this is a 4th leg bye. Lot of work given for umpire Roland Pinto in this over. The consecutive 4 times he lifted his leg to give that leg bye decision. So 5 very good deliveries there from Kishore. He looks like a different bowler. This time he got a connection and he was just split the fielder and got the boundary. Ashu at last managed to break the shackle in this particular over. But still I want to tell you this is a good over. And he just got to bat onto that, enough bat onto that to send the ball into the deep third man boundary for 4 runs. So with that boundary, scoreboard now moves on to 18 on the board. 3 overs completed, 18 on the board. They're going exactly 6 runs per over. There's only one boundary, I will tell you, otherwise it's going to be a maiden over from Kishore, isn't it? All the runs came in the form of leg bye, 1 dotted delivery. Then last ball, Ashu, very important for his team to get that boundary in that last ball, isn't it? Desperately wanted. Now, last over will go into comments from the commentary box, and Bharat brought into attack to Nikit. This time top edge opportunity. The bowler himself is going to that catch and he completes the catch. Again, we are talking about the big fish. This is one more big fish in the net. This is one more big fish in the net here for the team. Mighty Bulls has got a mighty wicket of Nikit. Just he wanted to go across the line. Just wanted to try to get a big shot. Got a top edge. Ball ballooning high up in there. Have a look at that one. He's just shuffled across, tried to hit against the turn and face the penalty for that. And a wonderful catch. I will tell you, it seems a little bit easy, but when you are going back and taking a high catch, it's not so easy. The great job from Bharat to dismiss danger man Nikit into pavilion, because he is the man who played brilliant innings in the qualifier number 1 against the same team. But that is not in the underlight, I will tell you. And this is what I'm talking about. They scored a 40 plus runs. I think 45 runs they scored against a team, same team. This time, delicately played, delicately played, and the fielder is just got a hand onto that, but still it's not good enough. Still it's not good enough. Ball is driving towards a deep third man boundary for 4 runs. Lovely improvising, delicately played. Have a look at your intelligent cricket. And the fielder just moving from the fine leg, he's got hand onto that, but because of the hardness of the ball is still traveling towards a deep third man boundary for 4 runs. The welcome boundary coming up here for Tatvamasi. 22 for the loss of 2 wickets. 4 balls remaining. So once again, one more attempt to... Oh! This is going to be a...
Just inside the boundary line, looks like the fielder has managed to stop the boundary. The couple of, no, umpire Arish Patel signaled it's a boundary. It's a boundary. Have a look at it, what really happened. Have a look at the ball just changing the position and misjudgment by the two fielders. And ball going to hit the wall. Absolutely right. It's 26 for the loss of 2 wickets. Very important runs coming from the bat of both the batters. This time, Ashu can't run. Ashu can't run. And unfortunately, the batter is going to the pavilion. Nishu, let me correction. The man is back in the pavilion. Ashwit is in a two-mind whether go for the run or not. But Nishu, I think, is a batter. Unfortunately, is back in the pavilion. But he's played a small cameo. Very important boundary came from his bat in this last over. 26 for the loss of 3 wickets. So we can see that the noises in the cricket ground. That's the only thing what we are the spectators will going to enjoy the Nasik bands. 26 for the loss of 3 wickets. Bharat bowling right arm over the wicket to Sunil. Ball him, cleaned him up. The one more wicket is back in the pavilion. It's 26 for the loss of 4 wickets. The bowler Bharat strikes. This is not a wicket taker, I will tell you. Ball after 1 bounce, 2 bounce came into the bat, and Sunil is a fresh leg. The new batter is fails to read the bounce of the delivery and pays the penalty for that. It's 26 for loss of 4 wickets. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ನ ಹೊರಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಕೂಡ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ನ ಹೊರಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಫೀಲ್ಡರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಫೀಲ್ಡರ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಟೀಮ್ ತತ್ವಮಸಿ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್. So 26 for the loss of 4 wickets. And last delivery of their innings is coming up. The new batter Jitesh, can he manage to get one big shot here? Wait and see. This time he missed it. He missed it, and a chance of run out in a non-striker's end, and out is given. That's it. Tatvamasi will go in to finish their innings with a 26. And they set a target of 27 to win the match, to become the champion here. And I think the team Mighty Bulls certainly will go into happy with the performance in their bowling department. But you cannot underestimate this total under floodlight. 26.
2024 और जैसा कि आपने कहा एक बार फिर से हम संगठक ऑर्गेनाइजर्स का हृदयपूर्वक अभिवादन करते हैं कि हमें भी इस श्रृंखला का इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनने का मौका उन्होंने प्रदान किया बी अ पार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट एक बार फिर से ऑर्गेनाइजर संगठकों का हम हृदयपूर्वक अभिवादन करते हैं हर्टफुली thankful to you sir for being the opportunity for being the part of this tournament so back to this game and now 27th target और सतीश ने अपने फॉर्म में बिल्कुल अंडर लाइट्स यहाँ पर कुछ हद तक कॉम्पिटिटिव साबित हो सकता है देखते हैं क्या होता है इस वक्त माइटी बुल्स के लिए और ये गेंद इस बार बोल्ड फर्स्ट बॉल डिस्मिसल एंड दिस इज एन एब्सोल्युटली ड्रीम स्टार्ट फॉर द बॉलर सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता और बल्लेबाज थे इस वक्त सुजन लेकिन पूरी तरह स्टंप से एक्सपोज कर चुके थे और देखिए हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले दिस इज एन एब्सोल्युटली गुड डिलीवरी मिडल ऑफ स्टंप को कंसंट्रेट कर आते हुए पूरी तरह स्टंप से एक्सपोज करते हुए गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाहता चूके और गेंद के बल्ले को वंचित करते सीधे मिडल ऑफ स्टंप को बिखेर कर ले जाती हुई पहले गेंद पर सुजन का विकेट गिर चुका है और ऐसा कहना पड़ेगा ये विकेट का पतन इस वक्त माइटी बुल्स के लिए कुछ ड्रॉबैक यहां पर साबित हो सकता है और इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में भवित का आगमन होता हुआ ही इज कमिंग एज अ नंबर 3 बैट्समैन कम्स आउट टू द मिडल और वो इस वक्त सामना करेंगे सुजीत का तो सुजीत अपनी पहली गेंद पर विकेट प्राप्त करने के बाद काफी हद तक आत्मविश्वास भरे नजर आते हुए और इस बीच गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज भवित के लिए और बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद अच्छी गेंद एक्स्ट्रा क्विक पेस ऑफ वर्क एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बिहाइंड द स्टंप बट द बैट्समैन इज स्ट्रेट द क्रीज एंड बिकॉज ऑफ दैट ही इज सर्वाइव्ड और दो बेहतरीन गेंदें इस वक्त सुजीत फेंक चुके हैं और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 0 पर इट्स नॉट फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस So fantastic piece of bowling performance continuing here from the bowler Sujit और एक बार फिर से वो गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए भवित के लिए बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार और इस बीच भवित सामना करते हुए ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को खेलना चाहा एक बार फिर से डॉट गेंद 3 डॉट बॉल्स इन अ रो and this is a fantastic over progressing here so far from Sujit निस्संदेह हर डॉट गेंद के साथ यहाँ पर तत्वमसी के समर्थक सपोर्टर्स की गूंजे यहाँ पर सुनाई देते हुए सीटियों की आवाज तालियों की आवाज सुनाई देते हुए और इस बीच सुजीत अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से आती हुई इस बार वाइड का इशारा ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए और अंपायर रोलैंड पिंटो ने इसे सही तरीके से वाइड घोषित किया और इस वाइड के रन के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है इट्स 1 for the loss of 1 wicket in the over number first in progress what a fantastic atmosphere we are just watching here under floodlights at the grand finale of this prestigious cricket tournament Kottary Premier League season 5 2024 is now progressing here again is that is a good delivery nip back a little bit at the last moment और गेंद को रक्षात्मक तरीके से इस वक्त खेल दिया था फ्रंट फुट पर जाने के बाद मिड ऑफ पर और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ
स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका 2 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। और फिर से एक बार सुजीत गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, स्क्वायर लेग पर गेंद पहुंचे, शॉट मिड विकेट पर कहना पड़ेगा, गेंद पहुंच चुकी है। रन बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5 for the loss of 1 wicket, 2 for the loss of 1 wicket and 5 deliveries bowled in this over. Fantastic over progressing here so far from Sujit. इस ओवर में अंतिम बार फॉर द लास्ट टाइम इन दिस ओवर, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट हियर ही बॉल्स। और ये गेंद इस बार अंदर की ओर आते हुए ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, गेंद इस वक्त पहुंच चुकी है एक्स्ट्रा कवर पर, लेकिन इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाए, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। बैकफुट पर जाने के बाद गेंद को पंच किया था, स्क्वायर ऑफ द विकेट, 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर। 3 for the loss of 1 wicket आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर। और सतीश यहां पर 27 रनों का लक्ष्य, 6.75 एट द स्टार्ट ऑफ देयर इनिंग्स द रिक्वायर्ड रन रेट, एंड नाउ it will gone up to 8 runs per over. That means 24 runs required from 18 balls. निश्चित रूप से मैं कहूंगा पहले ओवर में सुजीत ने एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर दिया है। Exactly, Gopi. It's a good start given by Sujit, isn't it? Because they knows that they're depending a big total, so need to get some good start. And good to see that he bowled that over in the power play, and he got a wicket of danger man Sujan as well. So that means the captain must be pleased with the performance of bowler Sujit. But that 1 over is not good enough, because we have a danger man Sukesh is in other end. He's a man, he can be the very, very effective, isn't it? Because he knows that the kind of the condition, kind of situation he's dealing with, he need to be there till the end of this match. Then definitely the opportunity for the team Mighty Bulls to win this match. And wait and see, it's going to be a great contest now, how well these two bowler as well as the batter will go into face each other. Exactly, Satish. देखते हैं क्या होता है बचे हुए 3 ओवर में। ये गेंद ऑप्शन से काफी बाहर, और नो बॉल का इशारा अंपायर का, और बल्लेबाज दौड़कर 1 रन प्राप्त कर चुके हैं। गेंद इस वक्त गेंदबाज निशु के हाथ से फिसल गए थे, और नो बॉल का इशारा और फ्री हिट गेंद इस वक्त यहां पर बल्लेबाज के लिए। और इस वक्त सुकेश ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं, भविष्य स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है। और देखना यह है कि इस वक्त फ्री हिट गेंद का भविष्य इस वक्त किस तरह से फायदा उठा पाते हैं। और अंपायर ने इशारा किया कि इस वक्त ये फ्री हिट गेंद है, और निशु इस वक्त गेंदबाजी करते हुए भविष्य के लिए फ्री हिट गेंद पर। यह गेंद फुल टॉस, गेंद को पुल किया, इस वक्त गेंद लंगोन की ओर बढ़ती हुई, और गेंद लंगोन सीमा रेखा के अंदर लपक ली गई है, लेकिन यहां पर नो बॉल घोषित। एक बार फिर से फ्री हिट बरकरार, और यहां पर मैं जानना चाहूंगा असल में वहां पर क्या हुआ था। देखिए यहां पर रिप्ले दिखाया जा रहा है, आगे आकर गेंद को बीमर गेंद को इस वक्त उछाला था, और गेंद हवा में थी, गेंद को इस वक्त वहां पर छक्के के लिए डिस्पैच करने में सफल। तो अंपायर इट्स अ 6 और नॉट। तो यहां पर 6 runs declared it, and that vital 6 increasing the total to 12 now. और निश्चित रूप से न सिर्फ छक्का प्राप्त हुआ इस बीमर गेंद पर, बल्कि फ्री हिट गेंद भी इस वक्त बल्लेबाज के लिए। नो बॉल पर छक्का लगाने में सफल, कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकलते हुए फुल टॉस गेंद पर, और 6 रन इस वक्त मिलता हुआ। इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेला, फ्री हिट गेंद है, और गेंद को इस वक्त खेल दिया डीप मिड विकेट पर, 1 रन का इजाफा, मिसफील्ड, लेकिन बल्लेबाज एक ही रन बल्लेबाज को मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब कुल मिलाकर 13 रनों पर। 13 ऑन द बोर्ड, 1 विकेट लॉस्ट एंड 14 रन्स मोर रिक्वायर्ड। और इस वक्त गेंदें बाकी हैं कुल मिलाकर 17। और इस बीच गेंदबाज निशु गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई विकेट कीपर चुके शॉट फाइन लेग फील्डर के हाथों में गेंद, रन्स नहीं मिलेगा। बेहतर कमबैक इस वक्त गेंदबाज द्वारा। और अब इक्वेशन स्टैंड 16 बॉल्स रिमाइनिंग, 14 रन्स रिक्वायर्ड। और दोनों टीमों के समर्थक अपने टीम के खिलाड़ियों का मनोबल इस वक्त बढ़ाते हुए तालियों के साथ, सीटियों के साथ, और बराबर का टक्कर यहां पर जारी है। और निशु अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार बेहतर गेंद थी, लेग कटर गेंद, लगभग धीमी गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद थी, और गेंद काफी देर तक हवा में रही थी। आखिरकार गेंद को उछालने के प्रयास में चूके, और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। तो छक्का लगाने के बाद एक अच्छा कमबैक गेंदबाज निशु इस वक्त कर चुके हैं। 2 लगातार डाउन गेंदें यहां पर फेंक चुके हैं, और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। 14 on the board,
तो एक बार फिर से दिशा से भटकती हुई गेंद उन्होंने फेंकी थी लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर, और इस बीच वाइड घोषित करते हुए अंपायर। 3 गेंदें अभी भी बाकी इस ओवर में। निशु अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार बेहतर गेंद, रिवर्स शॉट खेलना चाहा, शॉट फाइन लेग फील्डर के हाथों से गेंद चूकी, रन के लिए दौड़ पड़े, रन का खतरा, और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट हिम वन ऑफ देम बैक इनटू द पेविलियन। थोड़ी सी हिचकिचाहट दोनों बल्लेबाजों के बीच में, देखिए किस तरीके से हुआ था। विकेट कीपर के हाथों से गेंद चूकी, शॉट फाइन लेग फील्डर के हाथों से भी चूकी। दूसरे प्रयत्न में जब तक शॉट फाइन लेग फील्डर ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, बल्लेबाज रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन बल्लेबाज क्रीज तक नहीं पहुंच पाए। दूसरा विकेट गिर चुका है, और अब इक्वेशन स्टैंड्स 14 balls remaining and 13 runs to get. What a fantastic grand finale match is now going on here under floodlights. इस वक्त कोटारी प्रीमियर लीग सीजन 5 2024 का खिताब प्राप्त करने के लिए, चैंपियन बनने के लिए इस वक्त मुकाबला जारी है। एक कड़ा संघर्ष इस मैदान पर जारी है, और इस वक्त इंतजार है नए बल्लेबाज का। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द नंबर 4 बैट्समैन। और जहां तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाज का, तो इस वक्त नन अदर दैन द बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, प्रदीप कोटारी। इस संदिग्ध मोड़ पर काफी अनुभव उनके पास है, कई साल उन्होंने अंडरआर्म क्रिकेट में अपना छाप डाली है, और इस बीच वो क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, और जहां तक बचे हुए गेंद का सवाल है तो 2 गेंदें इस ओवर में बाकी। और निशु इस वक्त गेंदबाजी करते हुए प्रदीप के लिए 14 गेंदों पर 13 रन चाहिए विजय के लिए। और ओवर की अगली गेंद लेकर निशु इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रदीप के लिए अगली गेंद, ये गेंद फुल टॉस ऑफ स्टंप से बाहर, विकेट कीपर चूके, लेकिन यहां पर वाइड नहीं घोषित किया गया, सही गेंद घोषित, और इस बीच डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ। 13 गेंदें 13 रन चाहिए, 13 needed from 13 deliveries। तो अंतिम बार इस ओवर में निशु गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रदीप के लिए ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश किया, रन के लिए, ओह दिस माइट बी डिजास्टर देयर, वहां पर शायद रन हो सकता था नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज अगर दौड़ते हैं, और लेकिन नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज ने शायद स्ट्राइक अपने पास रखना मुनासिब समझा, इस वजह से वो नहीं दौड़े, और प्रदीप कुछ हद तक नाखुश उनसे दिखाई दे। देखिए किस तरीके से हल्के से पुश किया था, रन जरूर था वहां पर, पहले ही अगर रिस्पॉन्स मिलता नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज द्वारा, लेकिन आखिरकार रन नहीं मिला। 2 लगातार डॉट गेंदे, अब 12 balls 13 रन। और सतीश इक्वेशन पहले ओवर के मुकाबले कुछ हद तक कम हो चुका है, लेकिन अंतिम 2 डॉट गेंदों के खेलने की वजह से इस वक्त मैच अभी भी कहना पड़ेगा इट्स गोइंग टू बी 50-50 एट दिस सिचुएशन। Exactly, Gopi, it's going to be a 50-50. But I think they lost momentum in the second over, especially the team of Mighty Bulls after they got a 6 for the no ball, and then they lost the wicket, and then bowler bounced back very well. But still, I think, Gopi, 13 to get from 12 balls, it's not so easy in this condition under flat. This is going to be anybody's game. It's going to be anybody's game, but in the naked eye, we can see that having 8 wickets and having Sukesh in other end, Sukesh is not looks like that much of comfortable in the middle, but he can be a very handy, and having experienced batter like Pradeep Kottary in other end, it can be manageable. Wait and see. बिल्कुल सतीश, ऑफ स्टंप से बाहर पहली गेंद स्टार्ट्स ऑफ विद द वाइड, एंड नाउ इक्वेशन 12 runs required from 12 ball. Starts off with a wide by Sachin Raj. और यहाँ पर बिल्कुल सही बात आपने फरमाया थी, छक्का लगाने के बाद उस फुल टॉस गेंद पर, नो बॉल गेंद पर, उसके बाद कुछ हद तक मोमेंटम बल्लेबाजों ने खोया, हालांकि 1-2 विकेट भी गिरे, और आखिरकार मैच को उसके बाद जो गेंदबाज से निशु बराबरी पर लाकर खड़ा कर चुके हैं। और इस बीच गेंदबाज सचिन राज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, वाइड के साथ गेंदबाजी की शुरुआत वो कर चुके हैं। दाहिने हाथ राउंड द विकेट प्रदीप के लिए, इस बार गेंद को खेल दिया सुकेश ने खूबसूरती के साथ, बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में गेंद इस वक्त सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। फैंटास्टिक प्लेसमेंट, पहले ही भाप लिया था कि डीप बैकवर्ड थर्ड मैन और डीप थर्ड मैन के बीच कोई फील्डर तैनात है। इंटेलिजेंटली प्लेड विद अ ट्विस्टेड बैट, हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, इनटू द विकेट गैप, एंड ही जस्ट गॉट द बाउंड्री फॉर दैट स्ट्रोक। फैंटास्टिकली स्ट्रक केम फ्रॉम द बैट ऑफ सुकेश, और इस चौके के साथ समीकरण कुछ हद तक आसान होता हुआ। 8 रन चाहिए, 11 गेंदें बाकी, 11 balls 8 runs रिक्वायर्ड। अब सेंसिबल क्रिकेट की जरूरत है यहां पर माइटी बुल्स के बल्लेबाजों को, जबकि यहां पर तत्वमसी के गेंदबाजों को जरूरत है एक घातक गेंदबाजी।
और इस बीच गेंदबाज उस घातक गेंदबाजी की तलाश में सचिन राज अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद इस बार स्वीप किया, गेंद जाती है स्क्वायर लेग पर, कोई फील्डर वहां पर नहीं, फाइन लेग से फील्डर पहुंचे, शॉर्ट फाइन लेग से एक रन जरूर मिला और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 20 रनों पर। 10 बॉल्स रिमेनिंग, 7 रन रिक्वायर्ड और तख्ता कुछ हद तक जरूर भारी लगता हुआ माइटी बुल्स का, लेकिन बाउंस बैक करने का मौका जरूर है इन बचे हुए 10 गेंदों में तत्वमसी के गेंदबाजों को। और इस बीच गेंदबाज की गेंद सचिन राज की गेंद को स्वीप करना चाहा, विकेट कीपर के हाथों में गेंद पहुंची और चूंकि इस वक्त प्रदीप कोठारी और विकेट कीपर ने अपने दूसरे प्रयत्न में गेंद को फील्ड कर लिया तो गेंद और बल्ले के बीच में कड़ा संघर्ष यहां पर जारी है। और फिर से एक बार सचिन राज गेंदबाजी आगे बढ़ाते हैं, यह गेंद इस बार प्रदीप के लिए बल्ले का बाहरी किनारा, गेटिंग इज आउटसाइड एज, ओह मिसेस, बैकअप इस वक्त होता हुआ एक रन मिलेगा। 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 6 रिक्वायर्ड, 8 बॉल्स रिमाइनिंग। तो इस वक्त सुकेश जो कि काफी हद तक आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए सामना करने के लिए तैयार, सचिन राज की ओवर की अंतिम गेंद का। और इस बीच सचिन राज दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद स्वीप किया, इस वक्त कोई फील्डर नहीं, फील्डर मौजूद है डीप स्क्वायर लेग पर, लेकिन थोड़े से पीछे, क्लीन पिकअप, नॉट मोर देन अ सिंगल और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर। 22 ऑन द बोर्ड, 5 रिक्वायर्ड फ्रॉम 7 बॉल्स। और इस बीच अंतिम गेंद लेकर सचिन राज इस वक्त तैयार रहा तो प्रदीप इस देखते हैं इस अंतिम गेंद में किस तरीके की बल्लेबाजी अपनाते हैं। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद ओह स्पेक्ट्रा वाइड, दिस इज नो बॉल इन फैक्ट एंड अ फ्री डिलीवरी एंड टाइड इज नाउ कंप्लीटली टर्न्ड। ऑफ स्टंप से काफी बाहर, लाइन के बाहर गेंद फेंके थे और न सिर्फ नो बॉल का रन जुड़ा बल्कि फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज प्रदीप कोठारी के पक्ष में। 4 रन चाहिए, 7 गेंदें बाकी और इस वक्त फ्री हिट पर करारा प्रहार लगाने का स्वर्ण अवकाश बल्लेबाज प्रदीप के सामने। और देखते हैं यहां पर इस फ्री हिट गेंद पर वो करारा प्रहार लगा पाते हैं या नहीं। ये गेंद इस बार गेंद को चूके और गेंद इस वक्त रन आउट का खतरा हो सकता है, लेकिन चूके ओवर थ्रो और ओवर थ्रो भी रन से और रन के लिए दौड़ पड़े। फिर से एक बार हाँ ना यहाँ पर हिचकिचाहट चलती हुई, मेरे ख्याल से सुकेश स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। अब 6 गेंदें बाकी, 4 रन चाहिए तो इस गेंद पर सिंगल्स जरूर बन सकता था दोनों प्रयत्नों में सतीश, लेकिन सुकेश को शायद अपने आप पर विश्वास है कि अंतिम ओवर में विजय दिला सकते, तो इस वजह से उन्होंने प्रदीप कोठारी को वापस भेजा सिंगल लेने से दोनों मौकों में। Exactly, Gope. There could be not only single. If they run for the first when ball is gone behind, it might be a single. Then one for the overthrow. It might be a 2 runs. Then it's going to be so easy for the last over to get a 2 runs. But it's absolutely mind game, Gopi. It's not so easy. We are talking here in having a mic in our hand. It's so easy, but having a bat in your hand and performing in the middle, it's a totally different, isn't it? This is an under pressure game. It is a mega final. We can understand that. That Shukesh knows that the last over, he wanted to keep the strike in the last over. So 4 runs to get. Now it's going to be a great contest between 2 great players. Because Sujit, because Nikit is brought into attack and Shukesh is in front of him. 2 great all-rounders, and wait and see who will going to win the race. This is going to be decided over who will going to become the champion of this Kottary Premier League 2024. Exactly, सतीश। देखते हैं अंतिम ओवर में क्या होता है। The last over of the tournament is now coming up. पहली गेंद हल्के से पुश किया, सुकेश के हाथों में गेंद, वहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। 1 रन मिला इस बीच और सुकेश ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं। और इस बीच प्रदीप इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। 5 balls remaining, 3 runs required. The pressure is now building up on both sides. और विजय के लिए इस वक्त कड़ा संघर्ष जारी है। रनों की सख्त जरूरत इस वक्त माइटी बुल्स के लिए, जबकि यहां पर डॉट गेंदों की और विकेटों की सख्त दरकार कोट्टारी तत्वमसी के गेंदबाज निकित को। तो देखते हैं इन 5 गेंदों में क्या होता है। 5 balls, 3 runs. Here we go. दाहिने हाथ राउंड द विकेट, निकित फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रदीप कोट्टारी इस वक्त सामना करते हुए। और इस बीच ये गेंद इस बार गेंद को खेलना था, डॉट गेंद। 4 balls and 3 runs now. और निकित ने 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में फेंके हैं। अगर एक और डॉट गेंद यहां पर होता है इस मौके पर तो निस्संदेह इस वक्त दबाव पूरी तरह बल्लेबाज के ऊपर आ जाएगा। तो निकित इस वक्त अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। दोनों बल्लेबाज सुकेश और प्रदीप कोट्टारी कुछ बातचीत करने के बाद रणनीति के बारे में, बल्लेबाजी के टैक्टिक्स, रणनीति के बारे में इस वक्त वो अपने अपने स्थानों पर लौटते हुए। और गेंदबाज इस वक्त तैयार। 4 गेंदें 3 रन। इस बार बैकफुट पर गए, चूके, डॉट गेंद, 3 of 3। तो यहां पर निस्संदेह अब दबाव, स्ट्रेट अवे द प्रेशर ऑन द बैट्समैन।
तो 2 लगातार डॉट गेंद है इस वक्त के लिए और अब ऐसा कहना पड़ेगा इट्स गोइंग टू बी अ 50-50 गेम एट दिस सिचुएशन। और आमतौर पर उर्वा मैदान का स्वभाव है कि अंडर फ्लड लाइट से रन बनाना कुछ हद तक काफी हद तक कठिन साबित होता है। जैसे जैसे रात देर रात होती जाती है, वक्त गुजरता जाता है और यहाँ पर ऐसा ही होता हुआ गेंद को ठीक तरह से साइट नहीं कर पा रहे प्रदीप। और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज निखित गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दबाव दोनों टीमों के ऊपर साफ बढ़ता दिखाई देता हुआ। और इस बीच निखित अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिना हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दिस इज अ फनी थिंग्स इज गोइंग ऑन देयर, अप गोस द फिंगर, मंकन आउट इस वक्त करते हुए निखित। और सुकेश का विकेट यहां पर गिर चुका है। सुकेश कुछ बात करते हुए लेकिन अंपायर से, लेकिन यहां पर आउट घोषित कर चुके हैं अंपायर मंकन आउट के रूप में। और निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा सतीश, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट dismissals in cricket इस वक्त सुकेश के रूप में यहां पर विकेट गिर चुका है। Exactly, Gopi. It's a monketing out. Of course, that monketing out, that word which is removed by the ICC because this is one type of run out. Of course, monketing out because the monkered out, Vinu monkered actually is made that kind of run out so that it become a monketing out. But here is in the present rules and regulation is concerned, you can't leave the crease. You can't leave the crease before the bowler going to deliver the ball, isn't it? And Sukesh is a man is desperately wanted to come to the striker's end. Maybe the quite understandably just left the crease, but a good, maybe the presence of mind. Maybe you are not talking about is against the sportsman spirit. It's not nothing like that. This is not against the sportsman spirit because running before delivering that is also against the sportsman spirit, isn't it? So everything is acceptable in this present cricket, Gopi. बिल्कुल सतीश, निस्संदेह क्रिकेट क्रीड़ा स्फूर्ति के नियम के खिलाफ ऐसे आउट करना, लेकिन अब गेंद को डिलीवर जब तक ना करे क्रीज छोड़ना भी वहां पर क्रीड़ा स्फूर्ति के खिलाफ है। तो यहां पर मंकड़ आउट दिया गया है। और जैसा कि आपने बिल्कुल सही फरमाया सतीश, विनु मंकड़ जो भूतपूर्व भारत के ऑलराउंडर थे, उन्होंने पहली बार ऐसा आउट किया था 1952-53 के न्यूजीलैंड के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में, और उसके बाद उस डिसमिसल को मंकड़ आउट का नाम दिया गया। तो इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। प्रदीप कोट्टारी की बारी समाप्त। अब ऐसा कहना पड़ेगा, इनफैक्ट इस बार आउट होने वाले बल्लेबाज भरत आउट होकर पवेलियन वापस लौटते हुए और प्रदीप कोट्टारी हताश मनोभावना के साथ अपना बल्ला यानी बैट यहां पर फेंक चुके हैं, डॉट गेंद। और देखते हैं यहां पर क्या हुआ था रिप्ले में। एंड दिस टाइम यस इट्स भरत इज बैकिंग टू पवेलियन। अब 2 गेंदे बाकी, 3 रन चाहिए। अब स्ट्रेट अवे द प्रेशर इज नॉट बिल्डिंग ऑन द बैट्समैन। क्यों सतीश? Well, absolutely. The way that the bowler Nikit is handling the pressure is outstanding, isn't it? It is absolutely. But batter feel the pressure. We can see that Pradeep Kottary is definitely, of course, the experience. What we are talking about, nothing wrong with that experience. But sometimes, you just mentioned, Gopi, playing under floodlight is not so easy to sight the ball. Definitely, Wage will going to be the factor here and to sight the ball. I already mentioned because we can see that everyone is struggled. But rotating the strike is very important for Pradeep Kottary, but he couldn't manage to do that and they lost the wicket. But match which is not yet over, Gopi. One clean cricketing stroke is good enough for the team to win the match. But Nikit will not going to give this opportunity. So far he's handled the pressure very well and it's going to be a very interesting match, Gopi. It's nail biting match and it's going to be anybody's game. बिल्कुल सतीश, इस बीच टाइम्ड आउट, दे आर एक्सीड देयर टाइम लिमिट, तो एक खिलाड़ी को 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। और निस्संदेह बेहतरीन गेंदबाजी इस ओवर में निकित ने की है। और यहाँ पर पिछले गेंद पर शिवराज का विकेट गिरा था। किशोर अब आए क्रीज पर, तो किशोर के पास इस वक्त स्ट्राइक, 3 रन चाहिए, 2 गेंदे बाकी और दबाव इस वक्त दोनों टीमों के ऊपर साफ दिखाई देता हुआ। और इस बीच किशोर सामना करने के लिए तैयार। 2 for tie, 3 for win and 2 balls remaining. What a fantastic mega final match is now progressing here in this prestigious cricket tournament, Kottary Premier League Season 5 2024. और इस वक्त निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा निकित जिन्होंने अंतिम ओवर जो फेंका काफी बेहतरीन, पहले 4 गेंदे काफी बेहतरीन अंडर प्रेशर उन्होंने फेंका और बल्लेबाज को बांध कर रखने में 100% यश प्राप्त कर चुके हैं। अब 2 गेंदे 3 रन। Here we go, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार छाला गेंद को लंगोल पर गेंद जाती है और गेंद लंगोल नसीब वाला का बाहर 4 रनों के लिए। What a fantastic struck from Kishore, straight over the bowler's head, smash back, and with that boundary,
Mighty Bulls become the champion of Kottary Premier League Season 4 2024, which proudly presented by Kottary Yuva Vedike. So absolutely fantastic mega final grand finale match came to an end. Kyo Satish? Well, what a match. What a finish there from Kishore. Absolutely experience comes into play and he's become the hero. Only one cricketing stroke. I already mentioned before Wicket delivers the ball. I told that only one proper cricketing stroke is required to win the match. And this is a brave and gutsy batting, I will tell you. In this under pressure situation, Kishore played a absolutely brave and gutsy batting. This is what is required. If you need to be in pressure off, you need to get one big shot. A fantastic one. Congratulations for Mighty Bulls for your outstanding performance. Congratulations for team the runner-up winner. The congratulations both the team. They played an absolutely fantastic game of cricket. Winning and losing is a part of cricket, but they won the heart of all cricket lovers. Congratulations. Thank you.
ಮಾತ ಆಟಗಾರ ದಯಮಲ್ತದೆ ಗೋಪಿನಕ್ಲು ಮಾತಿರಲೇ ಬಲೆ ಮಾಲಕರ್ಲ ಬಲೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಡು ಮಾತ ಟೀಮ್ ದಾಕ್ಲ ಬಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಮಾಲಕರು ದಯಮಲ್ತದೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಬಟ್ ಟೈಮ್ದ ಅಭಾವ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ದಯಪಟ್ಟಾಗ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನಿಖಿಲ್ ಇನ್ನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇನ್ನ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎದುರು ಬಲೆ ಬಟ್ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಡು ಈಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆಗುಣಿಗಳು ಕಿಬಿ ಕೊರ್ತಿಗೆಲ್ಲೆ ಕಿಬಿ ಕೊಂಡ ಮಲ್ತಿಗೆಲ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ಅಲ್ಪ ಪಾತೆರನ ಬದಲು ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನಕಲು ಅಕಲ ಎದುರು ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಅಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪಾತೆರ್ಗ ಮಾತ ಭಲೆ ಮಾತಾ ಬತ್ತೇರು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಿರಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದೆ ಬಲೆ ಎದುರು ಈತೆ ಸಮಯನ ದಯಮಲ್ತ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮುಗ ಈ ಲೈಟನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ದೇರು ದಯಮಲ್ತದೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಅದು ದೂರ ಐತಿನಕ್ಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿತರಣೆ ಮಾತಿರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಲೆ ನಮ್ಮನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರನ್ನ ಬೆಳೆ ಸೋತಿನಕಲು 401 ವರ್ಷ ವಿನ್ನಾಪರ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮಾತ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ದಯಮಲ್ತದೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಮಾತ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಮಿತ್ತು ಬಲ್ಲೆ ದಯಮಾಲ್ತದೆ ಈತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದೇತ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣನು ಎಂಗಲ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚೇತನ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಪೊಂಪೆಲ್ ಮೇರೆ ನೆರವೇರಿಸಿರು ದಯಮಾಲ್ತ ಮಾತಾಡ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ದಯಮಾಲ್ತದ ಓನರ್ ಮಾತ ತಂಡದ ಓನರ್ ನಕಲು ಬಲೆ ದಯಮಾಲ್ತದ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಮತ್ತಿಗೆ ವರ್ಕ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಗಜಪಡೆ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಾಯಿನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಸ್ಕೈವಾಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಾಯಿನ ಶ್ರೇಯಂ ಕೊಟ್ಟಾರಿಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ರಾಜೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಗುರುಪುರ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಕೊಟ್ಟಾರಿ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ನವೀನ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಒಡ್ಡೂರು ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಇಲೈಟ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನರೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೇತೇರ್ಲ ಇತ್ತನದ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಮೈಟಿ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಾಯಿನ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅನುಷ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ತಂಡ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ అయిన ಸುಕೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಬೊಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ అయిన ರಾಕೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಮೂಡಶೆಡ್ಡೆ ಮುಕುಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಿತ್ ಬಲೆ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಆಶ್ರಯಡ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 5 ದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಅಕೇರಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸೇರಿದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋಣ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಮರೋಳಿ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿದು ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ అయిన ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ದೇರೆ ಬೈರುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಧನಂಜಯ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಬಲ್ಲಲ್ ಬಾಗ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕೇಶವ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಮಾರ್ಗನ್ ಗೇಟ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಉಮೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ನಾಗುರಿ ಬೇರ್ಲ 5 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ KPL ಪಂದ್ಯಾಟ ಅನ್ನಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮಂದಿರ ಅರೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿದು ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೀಚರ್ ಮೇರ್ಲಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಕೆಲಸನಾಗ ಏಪಲ ಸಾಕಾರ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿದು ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಅಶ್ವಿತ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ಲು ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದು ವಿಜಯ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅಡ್ಡಿಯಾರ್ ಮೇರ್ಲಾಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೋಡದ ದಿನದ ವನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೆಲ್ಲ ಬಂದಿರು ಒಕ್ಕ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ವಿಜಯ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಡ್ಡಿಯಾರ್ ದೋಟ ಮೇರೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿದು ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಮೈಟಿ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಉದಾರ ಪಡುತ್ತಿನಾರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದು ಮಾತಾ ಟೀಮ್ದ ಮಾಲಕೀರುಲ್ಲೆ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನವೀನ್ ಒಡ್ಡೂರುಲ್ಲೇರ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅನುಷ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಕುತ್ತಾರು ಮೇರಲ್ಲೋಲ್ಲೇರ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಗಜಪಡೆ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಾಯಿನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ಲುಲ್ಲೇರ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಕೈವಾಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಾಯಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಲ್ಲೇರ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಾಯಿನ ರಾಜೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಗುರುಪುರ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ರನ್ನರ್ಸ್ ಆಯ್ನ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ತತ್ವಮಸಿ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಾಯಿನ ರಜನಿ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಕಣ್ಣೂರು ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಈ ಮಾತ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದಯಮಂತದ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಮೈಟಿ ಇಲೈಟ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಏರಾಂಡಲ್ ಇತ್ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ದಯಮಂತ ಬರಡು ಮಾಲಕೆ ರಡ್ಜನೊಲ್ಲೆ ರೈಟ್ ಏರಾಂಡಲ್ ಇತ್ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ದಯಮಂತ ಬಲೆ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಇಲೈಟ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಅಂಚನೆ ಗೆಂದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಬದ್ದಿನ ತಂಡಗ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದು ರನ್ನರ್ ಸಾಯಿನ ತಂಡಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಇದ್ಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಾ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಿರಾಗ್ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡು ದಯಮಾತದ ಚಿರಾಗ್ ಕೊಡಕಲ್ ಬೇರೆ ಬರಡು ಅಕೆರಿದ ಚುಕ್ಕ ಎಂಗುಳುಲ್ಲ ದಯಮಾತದ ಕೆಪಿಎಲ್ದ ಇನಾಮ್ದ ಯೋಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನವನ್ನು ಚಿರಾಗ್ ಬೇರೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಡು ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಿನ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ರಡ್ಡು ಪಾದಿರ ಬಂದಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಥಮತವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಯರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು KPL 24 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡೆ ನಡಪಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡಪೇರೆ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಚೇತನ್ ಪಂಪುಲ್ ಮೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಅಂಚನೆ ಐತ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಅಶ್ವಿತ್ ಕೊಟ್ಟಾರನ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ರಾಕೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಸುಕೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಸುಮಾರು ಜನ ನೇತ ಪುದರ್ವನ್ರ ಪೂರ ನೇತ ಸದಸ್ಯರು ಒಂಜಿ ಐಕ್ಯಾಡ್ ಬಕ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ನೇಟ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಬಾರಿ ಶಿಸ್ತುಡು ನಮ್ಮ ನಡಪಾಯರೆ ಬಕ ನಡಪಾದಕೊರ್ನ ಪೂರ ಈ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬಕ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದಿನ ಪೂರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾನು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪರವರ್ದು ಉಡಲ್ ಜಿನ್ಯ ಸೊನ್ಮೆ ಸಂದವೆ ಬಾರಿ
ಪೂರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾಲಕರ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಿಯರು. ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಭಾರಿ ರೋಮಾಂಚನವಾಯಿನ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂದು ಮೂಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾದ ಎಂಗ್ಲು ಕುಲ್ಲುನಗಲ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಭಾರಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಆಯ್ತು. ಎಂಚೆ ಅಪ್ಪನ ಅಂದು ಓಡೆ ವಾ ರೀತಿಡು ಆ ಸೈಡ್ಗೆ ಈ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾಲುಣ್ಣು ಅಂದು ಆಡ ಕೊನೆಗೆಲ್ಲ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಕಿಯರು. ಅರ್ನ ಟೀಮು ವಿಜಯದ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಮಡ್ಡೆಲಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ನಿಖಿತ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಬಕ್ಕ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮ ಭಾರಿ ಉಲ್ಲಾಸಡ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಅಭಿನಂದಿಸುವ ದುಂಬಗ ದುವೇ ಸ್ಪಿರಿಟೆಡ್ ನನ್ನವರ ನಿಖಲ್ ವಿಜಯ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯರ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡಂದು ಪಂಡದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ಪೂರ ಅಕ್ಕನಗ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಅಣ್ಣನಗ್ಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಉಡಾಲ್ ಜಿಂಜ ಸೊನ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹರಿ ಓಂ. ಸುಲ್ಮೇಲು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ KPL 2024 ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಬಹುಮಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲುಪಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಬಹುಮಾನವನ್ನಂತೂ ವಿತರಿಸುವಂತಹ ಹೊತ್ತು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ, ದಾಂಡ್ಗರಣದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ, ಎಸೆತಗಾರರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಆಟಗಾರ ಯಾರು, ಇದಂತೂ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಏನಿಗೆ 94 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಓಟುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಸುಕೇಶ್ ಬ್ರಹ್ಮಟಿ ಮಾಡಿ ಬೋಲ್ಸ್ ಒಂದು ಬರಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸುಕೇಶ್ ಅವರ ಬನ್ನಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಇವರಿಗೆ ಕೇಶವ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಮಾರ್ಗನ್ ಕೇಟಿ ಅವರು ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಲೆ ಬರಲಿ. ಸುಕೇಶ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಭವದ ಆಟ, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತ ಆಟ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸುಕೇಶ್ 94 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ. ಧನ್ಯವಾದ ತಮಗೂ ಕೂಡ. ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರ 11 ಉದ್ಧರಣ ನೆಲಗಬಲಿಸಿದ ಎಸೆತಗಾರ 11 ಉದ್ಧರಣ ನೆಲಗಬಲಿಸಿದ ಎಸೆತಗಾರ ದಟ್ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದನ್ ನಿಶು ಫ್ರಮ್ ಟೀಮ್ ದ ಥೋಮಸ್ ದನದ ನಿಶಾಂತ್ ಬನ್ನಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಉತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಲನ್ನು ಬರಲಿ. ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಅನುಭವದ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ನಿಶಾಂತ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಇವರು ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಲೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಬರಲಿ. ತತ್ವಮಸಿ ತಂಡದ ಅನುಭವಿತ ಆಟಗಾರ ನಿಶಾಂತ್ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ, ತದನಂತರ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ any guesses? Here we are looking forward for the side of man of the match. That is none other than Kishore from Mighty Bulls. Kishore ಅವರೇ ಬನ್ನಿ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಟಗಾರ ಕಿಶೋರ್. ಅಂದಂತ ದಿವಸ ನೋಡಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟವಂತೂ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ತತ್ವಮಸಿತನದ ಪರವಾಗಿ ಸಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಆದರೆ 2 ಚೆಂಡು 3 ಓಟ, 2ರ ಮುಂದೆ 3 ಓಟವನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಕಿಶೋರ್ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಲೆ ಬರಲಿ. ಇವರಿಗೆ ಧನಂಜಯ್ ಇವರು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಲೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಬರಲಿ. ನೋಡಿ, ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದಂತ ಕಿಶೋರ್ ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಬಯಸಿದ್ದ, ಹಾಗೂ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ಧನಂಜಯ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಬಯಸಿದ್ದ. Tasi is moving
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವಂತಹ ಆಟಗಾರ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿವಸ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ಫೈನಲ್ ಹಂತದವರೆಗೂ ದಂಡಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ, ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಆಟದಂತ ಆಟಗಾರ. ದಟ್ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದನ್ ನಿಖಿತ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಫ್ರಮ್ ತತ್ವಮಸಿ. ತಂಡದ ನಿಖಿತ್ ರವರೇ ಬನ್ನಿ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಅನುಭವದ ಆಟ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲೂ ಆದರ ಸಮವನ್ನು ಆಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ ನಿಖಿತ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಬನ್ನಿ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಇವರಿಗೆ ಸುಕೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಇವರು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಪ್ತಾನ ನಿಖಿತ್ ಅನುಭವದ ಆಟವನ್ನು ಇವರಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದ ನಿಖಿತ್ ರವರೇ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ ನಿಖಿತ್ ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಬಯಸುತ್ತಾ, ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಗಜಪಟ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇವರಿಗೆ ಅಶ್ವಿತ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಕಿರುನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ ತಮಗೂ ಕೂಡ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಗಜಪಟ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇವರಿಗೆ ಅಶ್ವಿತ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಇವರು ಕಿರುನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇನ್ನೋರ್ವರು ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಸ್ಕೈ ಬಾಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಇವರಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅಡ್ಯಾರ್ ಇವರು ಕಿರುನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಲಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಬರಲಿ ಆಟಗಾರರೇ. ಮಾಲಕರ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆವಾಗಿರ್ತದೆ. ತಂಡದ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗದೆ ಮಾಲಕರ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೂ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಾದ ರಾಜೇಶ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂದೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಇವರು ಕಿರುನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ರಾಯಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಾದ ನವೀನ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ರಾಜೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅಡ್ಯಾರ್ ಇವರು ನವೀನ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಕಿರುನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಇಲೈಟ್ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಾದ ನರೇಶ್ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಇವರು ಕಿರುನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆ ತಂಡದ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕಿರುನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತದನಂತರ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024 ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನಂತೂ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಸಮಯವನ್ನಂತೂ ಕಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನಂತೂ ಅಲಂಕರಿಸುವಂತ ಹೊತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ that is none other than ಟೀಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ತತ್ವಮಸಿನ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಮಾಲಕ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಇವರಿಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅವರು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೋರದ ಕೈ ಚಪ್ಪಲನ್ನು ಬರಲಿ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಆಟ, ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಲಯಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದಂತ ತತ್ವಮಸಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಲೆ ಬರಲಿದೆ ಆಟಗಾರರೇ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೋಲು ಸಾಧನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೋಲು ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲು. ಇಂದಿನ ದಿವಸ ಸೋಲಿದೆ, ನಾಳೆ ಗೆಲುವಿದೆ, ಆದರೆ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಯಾರಿಂದಲೂ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಚೋರದ ಕೈ ಚಪ್ಪಲನ್ನು ಬರಲಿ. ಕೊಟ್ಟಾರಿ ತತ್ವಮಸಿ ಕ್ರೀಡಾರ್ಸ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಜೋರದ ಕೈ ಚಪ್ಪಲೆ ಬರಲಿ. ಸರಿ, ನಾಸಿಕ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ನಾಸಿಕ್
ಎಸ್ ಕಾನೂನು ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ನಂತರ ನಾಸಿಕ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಎಸ್ ಅದೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸೋಲು ಸಾಧನೆ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸೋಲು ಸೋತೇನೆಂದುಬೇಡ. ಸೋಲು ಸಮಯವನ್ನಂದು ಅರಿತು ಆಡದ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರಿತು ಆಡಿದರೆ ನೋಡಿ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ದಿವಸ ಸೋಲು, ನಾಳೆ ಗೆಲುವು, ಇದು ಎರಡು ಕೂಡ ಖಚಿತ ನೋಡಿ. ಚೋರದ ಕಷ್ಟಬಲ ಬರಲಿ, ಕೊಟ್ಟಾರಿದ ಥೋಮಸ್ ಜನದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಬರಲಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಕೊಟ್ಟಾರಿದ ಥೋಮಸ್ ಜನದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಚೋರದ ಕಷ್ಟಬಲ ಬರಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ. As a give a round of applause for the team of Kottary Tasi Cricketers ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಎಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ನೀಡಿದಂತ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿದಂತ ಗಣ್ಯಾಧಿಗಣ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಅನುಭವದ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದಂತ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಎಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ಗಣ್ಯಾಧಿಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವಂತ ಹೊತ್ತು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾದುಕುಳಿದ ತಂಡ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ತಂಡ, ನನ್ ಅದರ್ ದನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟೀಮ್ ಮೈಟಿ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಮೈಟಿ ಬುಲ್ಸ್ ಮಾಲಕರು, ಕಪ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಜೋರದ ಗಜಪಾಲ ಬರಲಿ ಟೀಮ್ ಮೈಟಿ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ. ಇವರಿಗೆ ಉಮೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ನಾಗುರಿ ಇವರು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಅನುಭವದ ಆಟ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, ನಿನ್ನೆಯ ದಿವಸದಿಂದ ಇಂದಿನ ದಿವಸವರೆಗೂ ಅನುಭವದ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಮೈಟಿ ಬುಲ್ಸ್ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಗಜಪಾಲ ಬರಲಿ. ಗಿವ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಮೈಟಿ ಬುಲ್ಸ್. Yes, KPL 2024, and we are here with the prize distribution of KPL 2024, and we are just in the second we are going to complete this program, and that match has been won by the team of Kottary Mighty Bulls. Give a round of applause for the team of champions of the champions, that is Kottary Mighty Bulls team. Thank you ಸರ್ವ ಗಣ್ಯಾಧಿಗಣ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ, ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹಾಗೂ ಆಟಗಾರರು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಮೈಟಿ ಬುಲ್ಸ್ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾಲಕರಿಗೆ. ಎಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ಗಣ್ಯಾಧಿಗಣ್ಯರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ಗಣ್ಯಾಧಿಗಣ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಆಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೊನ್ನಳು ಬೆಳಗಿನ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಸಾಯಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಜೋರಾದ ಕಚ್ಚಬಲ ಬರಲಿ ಸಾಯಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ನೀಡಿದಂತ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನೋಡಿ ಹೊನ್ನಲು ಬೆಳಕಿನನ್ನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಮಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ನೀಡಿದಂತ ಸಾಯಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಸರ್, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆಗಮಿಸಿದ ಸರ್ವ ಗಣ್ಯಾಧಿಗಣ್ಯ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ. ಇನ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡಕಲ್.